A very good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to Amravati in Maharashtra, live on the DDA stream for the semi-final stage on day number 4 of this Senior Nationals Baseball Championship 2025. The first game will be the women's game. It will be between Maharashtra and Telangana. As we can see, the players getting ready. Alongside with me in the commentary box is Eli Wilder. Welcome aboard, Eli. Yeah, thank you very much, Pierce, for having me. Great to be here and looking forward to the semifinal matchup and an opportunity to make it to the championship game is on the line for both of these teams. So we're looking forward to both seeing what they have.
So Maharashtra will be on the offense first in this semi-final. What do you make of this game, Eli? What are your expectations? Well, based on what I've seen from the stats so far, Maharashtra has been a strong team on both the men and the women's side. So, from what I can tell, Maharashtra is definitely marching their way towards the championship game. All they have to do is just get past here, and they are in. At least on the women's side, we'll definitely get to see the men's team play a little later, but we'll be focused on the women's side, and looking forward to seeing what they can do here. It's currently now 2-1 count here to lead off here in the top of the first. Now count runs 2-2 at the moment. So Telangana looking to try and get their first out of the game. Right back to the pitcher, and what a great play. And the first baseman drops in. That will allow the runner to be safe. So a catching error to start out for Telangana. Maharashtra has their leadoff hitter on. That was also the name of the game from their last opponents, based from their last opponent. They were facing Madhya Pradesh yesterday, or back on day one, won that one 12-0, only gave up one hit. Yeah, a mistake early on there. Mistakes are something which were very costly for the opponents of Maharashtra yesterday, which we saw. Telangana will want to take their chances here. Indeed, and especially early on, you definitely want to limit the amount of mistakes you have, especially against Maharashtra. They've been very effective both on offense and defense. So here we go. Next batter steps in. Now runner on first to deal with for Telangana, and, and that will be a foul ball. Pitch goes behind the batter right there, but it hits off the bat, so that will be a foul ball for strike one. So the runner will go back, and that will be a 0-1 count. That'll be a called strike for strike two, but the runner will move up to second on the stolen base. So now runner scoring position here early from Maharashtra. Ground ball at third base, but that will get the runner to throw down, and she'll slip. And now they're going to try and throw it back to get her out. And they will tag her out there, and that will be the first out of the inning for Telangana. And a good heads-up play right there to at least force her back to second base. Now right there, a good hard ground ball over to third base, but the runner got caught trying to move over. But then as soon as she slipped, the focus went right back onto her, and they'll throw it over to second, and they will tag her out there. So a bit of a early base running mistake there for Maharashtra. They'll still have the runner on first, but they will lose their lead runner at second now, as they got one out against them in the inning. Now umpire steps out from behind the plate as a hitter calls time.
So now steps back in with a run. I guess the runner didn't. That one missed low for ball one there. Now the runner will move up to second. 1-0 pitch, and that will miss upstairs. The runner will still remain at second there. So now 2-0 count here to our third hitter for Maharashtra. Telangana, 1 out on the inning so far. And now she'll try and steal third, and they throw it over. The runner will still remain at second now. One thing we noticed, Piyush, about both Maharashtra teams, they're very aggressive on the base paths, so no surprise here that they're already trying to get over to third this early. Yeah. Uh, Both the sides actually, Punjab and Maharashtra, both of them have similar game plans in the men's and the women's, is what I have noticed. We can see the coach being the same, using the same ideas for both the sides. The pace of Maharashtra is really good on the offense, especially. You can already tell they had to throw it over third just to try and keep the runner at second. So their aggressive tactics are definitely going to be in play here as that's popped up and out of play for foul ball. So now it would be strike one on the count, and now runs up to 2-1. Now it's popped up high in the air, and that will be caught by the shortstop for out number 2. And a good defensive play by Telangana. So now 2 outs on the inning. The runner on second still for Maharashtra. So here we go. Currently dealing with a little bit of a setback. I'm not sure if y'all are able to see the feed at the moment, but we're currently working on it as quickly as possible. And here we go. We are back. That ball is fouled back for another strike on the count. So far, Telangana, 2 outs on the inning so far against Maharashtra, with a runner still leave at either second or third. Here we go. Next pitch. Also fouled back for another strike. So now definitely dealing with a 2-strike count here for Telangana, an opportunity to get out of the inning.
It will be a huge statement if they keep them on zero in the first innings. So here we go, 2 strikes. And that will hit her. That's what you don't want to do right there. So now another runner gets on for Maharashtra and still 2 outs on the inning. So now still 2 outs here in the top of the first. And that comes up currently runner on first. And if I'm seeing this right, I believe there's also a runner on third as well. That will bounce low in the dirt. So now the runner moves up, puts them on second and third now. So now 1-0. That swung hard and misses. That will get to the backstop, and she will score. So now the first run of the game will score for Maharashtra, and they go up 1-0. So good heads-up base running right there. She slides the bag away. And this one here is a pitch that she was able to swing at, but still got away from the catcher to the backstop, and she lost her helmet and trying to get home there. She will slide in safe. So Making now the most of the Maharashtra will mistakes that take the they early lead 1-0, and indeed they are. So now got the runner on third. Another opportunity to try and score here. That ball's hit hard down the line, foul for strike two. So far, Maharashtra putting the bat on the ball early. Just got to be able to get that out in the field and force pressure on the defense here for against Telangana. So here we go now. Currently dealing with a 2-strike count. That ball's hit hard and off the glove of the third baseman, picked up by the shortstop, trying to get him out. But that will be a little wide. So she is safe there, and another run will score for Maharashtra. So now that will make it 2-0 for the score. And she will also move up to second on the ball going out of play. So far, a couple of early errors on the part of Telangana and allowed a couple of early runs to get on and runners get on and score. So now dealing with a runner on second at the moment with 2 outs. So asking, looks like they're all backing up at the moment. I had to step off to have a conversation. Looks like with the Telangana bench. And now we are back. So 2 outs here for Telangana in the top of the first, looking to try and get out of the jam here at the moment. Currently down 2-0 against Maharashtra. Not a bad spot there. That will miss low for ball one.
the offering here, and she'll almost looks like couldn't tell if that was foul or not, but looks like that was. So now I believe it'll run to I believe it is a 1-1 or 2-1 count. Jammed hard on the inside back to the pitcher, and she'll make the throw over to first for finally out number 3 of the inning. So a good job by Maharashtra putting pressure on the defense to get some runners on early, but a couple of costly errors on the part of Telangana allowed them to score. So now they will take an early lead 2-0 as we head to the bottom of the first, where Maharashtra will take the field, and we'll be right back here on the EDA network after this. So here we are back in the bottom of the first. Maharashtra taking the field for the first time this game. So they take an early 2-0 lead against Telangana on a couple of early errors and some pass balls to the backstop that allow the runners to score. So now Telangana will be coming up to the plate for their first half offense here. We finally get to see the Maharashtra women's team in action for the first time this tournament. So here we go. Ball misses outside right there. Ball, I believe that was ball 2. So right now, Maharashtra very much known for their defense and pitching. It's now currently down a little early against this batter. That one will also miss outside for, I believe, ball 2, or I believe it was ball 3. And that will miss outside for ball 4. So now Telangana gets their first base runner of the day and their first leadoff hitter on, first time this game as well. The pitcher being off radar will be interesting to see if Telangana can take the advantage of that. Indeed, already working quickly. That will go for ball 1. So now 5 straight balls in a row. So now hopefully Maharashtra's pitching will be able to get back on track here. And a pickoff attempt. Nothing comes of that. The runner gets back quickly. So now 1-0 pitch.
That will go in there for strike one. Now 1-1. And she'll take off her second. It looks like they got her at second, so now that'll be out number one on the inning for Maharashtra. Or actually, no, she's still standing at second. Yep, looks like he signaled out, so it looks like the umpires will be having a quick conference out in the field. So it looked like a close play. And it was hard to tell from the angle where we were seeing. A good strong throw from the catcher to try and get the runner at second. So hopefully we'll be able to learn something after the umpires break from their conference. And yep, looks like they confirmed the runner will be out at second. So Maharashtra using their defense to get out of a jam there. Or actually, no, never mind. Never mind. She'll be safe. So now, or actually, no, never mind. Confirmed out. So there we go. So out number one for Maharashtra on the inning. So now the bases are cleared. Good job on the defense to get the runner there. Ball misses outside now, so it looks like we're 2-1 on the count. So now 2-1 offering. And that's in there for strike two, right on the corner. It's now 2-2. Swing and a miss. The first strikeout for Maharashtra pitching on the day. I believe there will be many more to come. 2 outs on the inning here, and Telangana looking to try and start something offensively after losing their base via throw out at second. This pitch misses outside for ball one. So now 1-0 offering. That one will also miss outside for ball two. And then Maharashtra's pitching starting 2-0 again, but was able to come back all the way to strike him out last batter. 2-0. Right in there for strike one. It's always an important part of pitching right there, Piyush. Be able to get back into the count and try and work it back to your favor. Yeah, And that was she fouled was back for very much strike two. she was very much off radar earlier on, but now she's in the groove. Indeed, so now 2-2 count here and an opportunity for Maharashtra to get out of the inning. 2-2.
And that one misses way outside. Now ball 3 for a full count. Got to be an action pitch right here. It's got to go right at the batter at this point. So here we go. 3-2. Called strike 3, and that will be the end of the inning. And a good location right there. And Maharashtra's pitching now has 2 strikeouts on the day. And they'll get off the field there the end of the first inning. So now after 1, Maharashtra leads 2-0 as we go into the second here on the DDA streaming network. So now here we are. We are back now in the top of the second inning as Maharashtra comes back up to the plate as they currently lead 2-0 so far against Telangana. Now we'll miss inside for ball 1. So far, Maharashtra is pitching and defense, the name of the game, as they were able to throw out a runner in the bottom of the first as well as pick up 2 strikeouts. 1 swinging and 1 looking. So now looking to try and increase their lead here in the top of the second. And that one will miss upstairs for ball 2. So far, Telangana's pitching has been a little bit out of the way as that one misses for ball 3. A couple of early walks was the name of the game, and then some wild pitches all the way to the backstop allowed some runs to score for Maharashtra. So now currently sitting at a 3-0 count here for the leadoff hitter this inning. And she will jump out of the way of that one for ball 4, and Maharashtra has another leadoff runner on to start the inning. So 2 for 2 on that front, and getting their leadoff runner, getting their leadoff hitters on. Excuse me. So now more chances for Maharashtra to score early and increase their lead. They look a little low on confidence, do Telangana.
That one misses low for ball one, and the runner will move up to second now. Another stolen base for the Maharashtra offense. It looks like she'll be out. So it looks like she was trying to take second there. So now they will get the leadoff runner at second now. It looks like another conference with the umpires now. It looks like they were trying to see if that was a balk by the pitcher, because it looks like it wasn't an exact move there unless she was trying to make a move towards third where the ball was going. So now they'll be conversing there, see if it was illegal, and it looks like it was. So the runner will get third base there, and that will nullify the out. So in that case, what they were saying is that the move that the pitcher made to third was not a legal move. So in that case, what you have to do is you have to at least step off the back of the pitcher's mound if you want to try and make a move at the runner on the base pass. And that time there, she made a move towards home while trying to throw the third, which is illegal. So that is considered a balk, and that will put a runner on third for Maharashtra. If I understood what was going on there. Now I got multiple talk with the umpires now. Trying to plead their case here. So eventually they will. They're trying to plead their case. Will be audited now. So yeah, it looks like he's now asking them to get off the field. Definitely delaying the game here a little bit. So now back in it now. And that will miss low, and that will get away. Actually, I couldn't really tell, but it looks like there's no runner on third, so I guess they did call her out on the pickoff attempt. So now that will be one out for Telangana in the top of the second. Yeah, she's got out in the similar fashion as in the first innings. Now it looks like they'll have a bit of a. Looks like they're going through a pitching change now. She stepped out of the box for a few pitches. Or if it's the same, I believe it is the same pitcher. So now
umpire steps out from behind the plate. So now it's another. So now it's another umpire's con. Looks like he's now talking with the pitcher about the split stance from which the pitcher starts their motion. So now coach looks like coach is going out to tell her, "Hey, sorry, can't do that." So far, very interesting at bat. First, we have a runner get thrown out early. First, I thought it was a First, I thought it was an illegal motion towards third, but looks like they did call her out finally, or I guess they did. So now, asking her to change her pitching stance. So a lot of action going on this inning so far. We'll come to the field now. It looks like they're trying to, trying to at least show her something different with her pitching motion, but it looks like they're trying to plead their case. Break in the momentum in the game. Right now, it's supposed to have been a waiting game. Trying to get on the field at the moment. So now it looks like they're trying to change the way she's starting her motion now. It looks like can't tell if they have or if they've changed it or not, but it looks like they may have switched it up a little bit. So now the coach is finally coming off the field now as play resumes once again. So now still one out in the top of the second here for Maharashtra. Telangana able to pick off the runner going from second to third. Looks like they'll be resuming play once again. So currently with a 1-0 count. And that will go in there for strike one now, evens out at 1-1. And that one will miss low for
for ball 2 now. Honestly, I can't tell if there is a runner on third or not. I guess It's now there is. currently a 2-1 count here. Well, that is a good point if they're having to cover the play, but now that one's hit hard, and that will go into the gap there. And that will go all the way to the edge of the border. And she will make she'll make it all the way to third, and looks like hold up there. And it looks like a stand-up triple there for Maharashtra. It looks like they did have a runner on third, so that will make it 3-0 now. Adding another one on the board at the moment. So now another opportunity to try to increase that lead here again. Squares to bunt, but that will catch the corner for strike one. Another pitch in, strike two. Right on the low inside middle part of the plate. So now runs 0-2. An opportunity to get another out on the inning for Telangana. 0-2 pitch, and that will be fouled backwards out of play. So she'll live to see another pitch here. So far, fighting an 0-2 count with a runner on third, one out here in the top of the second for Maharashtra. And that one will miss outside in the other batter's box for ball two. So now currently a 1-2 count here. And that one's flied up in the air. And that will get down in short left center field. The run will come across. She will hold up at first and now makes it 4-0 Maharashtra. So far, it's been timely hitting now this innings for Maharashtra. At least for the first runner getting on via a walk, and then a couple of pass balls, and then the balk move that puts her on third, and a base hit to the outfield, and a base hit, a stand-up triple for that matter, to right center field, and then follows up with a short pop-up to left center to put that second run in for this inning. So that one will miss low for ball one. The runner will now move up to second. More aggressive base running from Maharashtra to try and get up early, increase the lead. Those delays not helping the pitcher. Indeed, and she'll throw over to third now. And the ball will get away, but not that far. A good thing shortstop was backing up there. So now runner on third now for Maharashtra. Another opportunity to bring another run in. So far, a 2-0 count. And that will go in there for strike one. Catches the outside corner there, runs 2-1. And based on that, it looks like that was strike two there. So now it runs 2-2. And here we go, 2-2. That was dribbled over to the left side. And she will be safe. Throw over came up short, so now that will score another run for Maharashtra.
And now it looks like that also went out of play, so that runner will move up to second now. It is 5-0, picking up their third run of the second inning. Cruising here, Maharashtra. Yet to register the first out, Telangana. Indeed, so far still nobody. So actually, I can't remember. Was it one out or no outs? And that will miss inside for ball one. Now 1-0 count. That will bounce up short, and the runner will now move to third. Now currently with a 2-0 count now for Maharashtra. So now a quick time called to readjust the plate. Here we go. We are going into it now. So 2-0. That one misses upstairs for ball three. So far, Telangana falling into a deep hole early due to costly errors in pitching, and that will be foul ball. So strike one. So far, Maharashtra leaning on their offense and aggressive base running early. Currently with a 3-1 count for this batter. And she'll swing through that one as well for strike two. Fouls that one to the backstop. So now with a full count here, Telangana an opportunity to try and get a second out in the inning. And a hard line ball, and that will be caught by the shortstop. And the runner on the third had to pause and go back there. Almost getting doubled off to end the inning. She'll be safe at third. So now 2 outs on the inning. It was a great play by the shortstop. So we take a look at the replay here. And that one she was just able to stick her glove out, and look what I found in the glove. Throws it over to the third to try and get the runner, but she gets back in safe. So now that will start out ball one low. Now 2 outs on the inning for Telangana. Still a 5-0 lead in Maharashtra's favor. It also bounces in for ball two. So now count runs 2-0 here in the hitter's favor. And gets that one in there for strike one right down the middle. Now it misses outside for ball three now. Still in the hitter's favor, but Telangana now 2 outs in the inning, trying to get out of the jam here and get back in to start hitting a little bit. 3-1. That one misses outside for ball four. So now Maharashtra with 2 runners on, both at the corners. So now another timeout called Ghana. So a quick water break. I don't know how the weather over there is, Piyush, but how important is it to be able to have
water breaks in between innings, or at least have a defensive timeout to get some water, especially with the weather over there in India at the moment. Well, in Maharashtra especially, you need a lot of water because there's always a high amount of humidity. Better to refresh yourself every now and then whenever possible. Well, that's a good thing, and that's what they're doing here. So now water break's finally over. Finally getting back to play here. So runners on the corners for Maharashtra, excuse me. So now 2 outs on the inning for Telangana. Currently 5-0 lead so far here in the top of the second. It's been a very long innings for Telangana. This And that will miss upstairs, and another runner moves up for Maharashtra to second. So an opportunity to score 2 runs on a base hit to the outfield. And that one misses a little bit up for ball 2 now. And not a bad spot right there. That one looked like it was just inside. It's now 2-0. And that will miss upstairs. Now ball 3. So now 3-0 count. Maharashtra with an opportunity to load the bases here in the top of the second. And that will be ball 4, but runners will move up on the pass ball all the way to the backstop. So now another one scores there. That runner moves up to third, and the runner on first with the walk. And now she's throwing to second. It looks like they're trying to try and get the runner, but she will score on the attempted double steal. So now Maharashtra already with both of their runners in on that single play. So now it's 8-0. So now I believe it'll be 7-0 in favor of Maharashtra. So still got the runner on first. Yes, they will be eyeing the mercy And rule that's some now. more of the aggressive base running by Maharashtra on display. Still 1 out for Telangana here in the top of the second. And that'll be a called strike 1 there, and another stolen base for Maharashtra. So now runner on second with 1 out. And that's a hard line drive, hit foul. It'll be strike 2 now. Right now, Telangana looking for their second out of the inning. And that will miss right over the batter's head for ball 1. That will miss outside, bounces in the dirt. Now runs ball 2, so even 2-2 count. Runner still holds at second. And a foul ball. She fought to stay alive here in this at bat. So still a 2-2 count here with 1 out. And she'll swing at that one. Hard ground ball, goal off the left side. Count still 2-2 with 1 out. Runner on second.
Telangana still looking for their second out of the inning. And that will also miss over her head. Ball 3. The count runs full. So here we go. Action pitch now for Telangana. 3-2. That ball's dribbled over to third. And a hard throw over, and they will get her there. The runner will move up to third now, but Telangana finally with their second out of the inning. So they'll now have 2 outs. Maharashtra with a runner on third to try and pick up another one here. They still lead 7-0. And a hard swing through that one for strike 1. So here we go. 0-1. That one misses low. Ball 1 just bounces right past the plate. Count runs at 1-1. Still 2 outs here. And that one will miss inside. Catcher having to squeeze that one. So now 2-1. So far, Telangana pitching is doing a little bit better this inning of being able to find it back into the zone. At least force contact against these Maharashtra hitters. Now one misses upstairs. Now runs 3-1 on the count. Maharashtra an opportunity to try and get another runner on base here. And that one misses upstairs for ball 4. So now 2 runners on for Maharashtra again at the corners. That one outside for ball 1. Another runner will move up to second. Now another opportunity to score 2 here for Maharashtra. Still 2 outs on the inning for Telangana, trying to get out of here with limited damage. So now 1-0. That one bounces by all the way to the backstop. No runner moves up. Not taking any risks there. Indeed, definitely want to try and preserve as much of the lead as you can, as big as it already is right now. So now 2-0. Skied high, and that will be missed out in center field, so that will at least bring 1 in. And it looks like the runner at first will hold up. Second run will come through. She tries to throw home, and that will get by to the backstop. So the hitter will move up to second now, and she'll hold there. So 2 more will come across the plate for Maharashtra. It's now 9-0 here. And another opportunity to try and make it 10-0 with a runner on second here in the top of the second. So far, Maharashtra's offense has been on a roll with aggressive base running and timely hitting. She'll pick over to third. No runner moves up there. She'll go back to second. And it looks like they called a balk there for the illegal move over. You can't really throw over to a bag that's not been occupied. So now runner on third for Maharashtra. That one will miss inside for ball. I believe that was ball 1. So now runner on third, 2 outs here in the top of the second. And that was skied out to center field, and that will be caught. And a great play made in the outfield there. Telangana out of the inning now
But Maharashtra doing more damage, picking up 7 that inning. So now it will be 9-0 going into the bottom of the second. And that was just a great play in the outfield right there. Skied out to center field nearly all the way to the fence. She'll make a running play over the shoulder there, and that will end the inning. So now Maharashtra coming back onto the field for the bottom of the second. We'll be right back after this. So here we are. We are now back in the bottom of the second. Maharashtra back into the field as they now have a 9-0 lead, courtesy of timely hitting and aggressive base running in the top of the second, picking up 7. So now a pitching change for the defense. New pitcher this inning, so now they will get started on defense here. That one misses outside for ball 1. So far, Maharashtra very effective on defense. Had a thrown base runner out in the first inning, along with 2 strikeouts. And that will miss upstairs for ball 2. So now falling a little bit behind 2-0. That one's fouled off to the right side. So we like to call those in America long strikes, because they go a long way, but they are not fair and they don't count. So now 2-1 count. Fouled off back to the net. So now strike 2. Good thing about Maharashtra's defense, the very good job of trying to get outs whenever they need it. And another long strike there, foul. So far, Maharashtra's pitching able to get back into the count even when they're down in the hitter's favor, working back from a couple of 2-0s for a couple of strikeouts this last inning. It's now 2-2. Swing and a miss, and that'll be another strikeout for the Maharashtra pitching staff, which brings their current total up to 3 now. So they get the leadoff out this inning. It's now 1 out on the inning so far, and that will be a swing through for strike 1. So now 0-1, and that one just misses outside for ball 1. Really good spot there, just off the edge of the plate.
It's now 1-1. And that one's popped right back up to the pitcher for easy out number 2. And congratulations from both middle infielders. So now 2 outs here for Maharashtra on the bottom of the second. And that one right there was just a really good pitch. Got jammed on the inside. Got jammed on the inside, and an easy play made for the pitcher. And that one's fouled out of play for strike 1. Or actually, never mind. I thought that was a pitch right there. A little too early. So a clean count here, starting out with 0-0, and she'll try and bunt it, and that will be fouled back to the net for strike 1. So far, Telangana being stifled by the Maharashtra pitching staff have yet to find an answer for him. And that was dribbled lightly to third and a throw over, and they call her safe. Looks like the first baseman brought her foot off the bag. So now another base runner for Telangana. So now the inning continues. I'm not sure if that was safe, Eli. It looked very close. Indeed. It looks like the throw beat her there a little bit, but it looks like she didn't get her foot back on the bag. So that will be another base runner for Telangana. Still 2 outs on the inning, though. And that one misses upstairs for ball 1. So now Telangana with a runner on. Definitely want to be a little more careful. Last time they had a runner on, got thrown out on a great throw by the catcher, and that will be a swing and a miss for strike 1. So 1-1 count now. And a soft dribbler this time to first base. And an easy play made there for the force out. So Maharashtra gets out of the inning with no damage at all. And now we go to the third inning. Maharashtra still leading 9-0. An opportunity to try and get some more on the board. We'll be right back on the DDA streaming network.
So here we go. We are now back finally in the third inning. Maharashtra currently leading 9-0. Telangana is yet to have an answer for their pitching staff. So now we head back. Now we head to the top of the third. That misses low for ball one. Maharashtra looking to add some more on here and try and end this game early. That misses low in the dirt for ball two. Also low for ball three now. So far, the main thing going for Maharashtra on offense is Telangana's pitching, giving up a lot of walks, and that will miss upstairs for ball four. That'll be 3 straight innings that Maharashtra has gotten their leadoff hitter on. Now an opportunity to try and bring her around and score the 10th run of the game for Maharashtra. And another stolen base. And one of the biggest things going for Maharashtra on offense. So now runner on second, scoring opportunity here. Currently a 1-0 count. That one misses low in the dirt for ball two. Two-0 count now. That one misses upstairs for ball three. It looks like she wanted to swing at that one right there. Luckily holds back enough to that one. And she'll swing at that one. That one misses in the dirt. So it looks like it will be, I guess that will be strike one. She wants to finish the game off in style. She wants to make sure that Indeed. the gun is a good shot. Indeed. So now facing a 3-1 count now. Currently with a runner on third. And a hard ground ball, and that gets through to center field. And a good thing she swung in that. Now she has a hit on the day, and that will score the 10th run of the game for Maharashtra, and that ball's going to get away. All the way back to the catcher, but luckily she doesn't move up, so that will keep the runner at first. But now Maharashtra now up 10-0. Great at bat right there. So now runner on first with a clean count, and that goes in for strike one. And another stolen bag. Runner moves up to second, putting them in scoring position yet again. 1-0, and she'll try and take third, and then she'll swing through that one for strike one. Or I think that was strike two. So they'll call time for a quick offensive conference. I believe it should be a 1-1 count now. A swing through that one first. And that would have been strike three. So now that would be the first out of the inning for Telangana. Still a runner on third at the moment for Maharashtra. Now one bounces in the dirt for ball one.
It's now 1-0 count. And Telangana's pitching, having to fight to try and get as many outs as they can. And she'll hit that one right back to the pitcher, but they'll take the out at first there. And that will score another run for Maharashtra. Or did they miss the throw there? Yeah, she Looks dropped like they it. did. Ooh. It looks like she dropped it, and now it looks like that went. Looks like that was overthrown and went out of play because now runner is on second at the moment. So a run will score for Maharashtra. That will make it now 11-0. And another runner on second. Still one out on the inning for Telangana. Up, and that will be a balk. She lifted her leg up twice. So now the runner will take third with no issue there. And that time right there, you can't raise your leg and then raise it up again. That's what we call double dipping. And that will miss inside for ball one, and she'll take home. And another run score from Maharashtra there. That was now 12-0. She'll be back in the dugout quickly. Easy. A little ground ball back to the pitcher, overthrown. She'll take second on the dead ball, and then moves up on a balk to third and takes home on a pass ball. And that'll be ball two now. Still one out on the inning for Telangana. And there's another ball dribbled back to the pitcher, and she will make the play there. So now 2 outs on the inning for Telangana. She was it, and she made sure that she got that throw down that time. So here we go, 2 outs on the inning for Telangana, looking to try and get out of this one. And that one's bounced in for ball one. That one is 2 outs. Even still on the inning from Maharashtra. Just with that one, foul back to the net, strike one. Now 1-1. Long fly ball hit, and that's going to get over the left fielder's head. That will roll all the way out to the tree line, and she will hold up there as it's already past the fence line out there. So that would be a long double for Maharashtra. And another runner on second. So now still 2 outs on the inning for Telangana. Maharashtra with another runner on second. They've already put up 3 this inning, and that one's hit down the line over to the left fielder. She'll get that in back. She'll get that in quickly and rolls all the way to the plate. And that runner will also move up to second. So now runners on second and third for Maharashtra, and still 2 outs. Absolutely demolishing their opponents here, Maharashtra. A huge statement before entering the finals. Indeed, and taking a look at the other side, still looking to get an update there from that game, but looks like
Actually, it looks like we won't be able to figure that out until later. But we'll definitely be able to call the championship game tomorrow. So hopefully we'll see. Hopefully we'll be able to see a lot of y'all there, or at least on the live stream. And that one's popped up on the infield, and that will get down. So that will bring one run across for Maharashtra. So now it's 13-0. Now we'll leave the runners at the corners, still 2 outs. It looks like she'll take second there as nobody was covering the bag. So now second and third for Maharashtra. 4 runs scored on the inning. Telangana just not have been able to claw back into the game after the first few mistakes they made in the first innings. Indeed, costly errors, walks, and a couple of pass balls allow Maharashtra to score a bunch early, especially in the first 2 innings. And now they're looking to tack on even more here. So it looks like they will send the runner back to first, as time was already called at that point. So it'll be runners on the corners for Maharashtra. And that one misses inside for ball 1, and the runner will now take second. So now we have runners on second and third. 1-0 offering. That was fouled back to the net for strike 1. So far, it's just mostly been a game all in Maharashtra's favor. Pitching staff holding Telangana to the minimum with a combined 3 strikeouts from both their pitchers. 1-1 count. And that one is hit hard back to the pitcher, and she will make the easy out at first there, and Telangana now out of the inning. But Maharashtra picking up 4 runs, making it 13-0. So now Telangana coming off the field. The mercy rule is in play now, so Maharashtra gets 3 outs in the bottom of the third. It will be the ball game. So we'll be right back after this. Maharashtra is set to come onto the field up 13-0. So here we go. We are now in the bottom of the third. Maharashtra up 13-0 against Telangana with an opportunity to try and end the game here on the mercy rule. So now set to take on 3 more hitters here, and that one misses outside for ball 1. So far, Maharashtra's pitching and defense have been excellent today, holding Telangana to the minimum and only allowing 2 base runners with a combined 3 strikeouts.
That one also misses outside for ball 2. Just 3 more outs here, and it will be the ball game. Looking to try and settle down here and put some strikes in the zone. So now coming back from 2-0, swing and a miss for strike 1. It's also one good thing that Maharashtra's pitching has done. Even down 2-0, being able to claw their way back into it and get the out. So now 2-1. Inside corner gets the call for strike 2. So now it evens back out at 2-2. An opportunity to try and get the leadoff out here. So now here we go, 2-2. Swing and a miss. They make that a 4th strikeout of the day for Maharashtra's pitching. They'll also get the first out of the inning. So far, very effective today for Maharashtra. So now they've been able to get the leadoff out again here. So now 1 out on the inning so far. And that will miss up for ball 1. Now looking to try and work their way back into the count here. And that one misses low for ball 2. Down 2-0, I would not be surprised if we could see a strike right here. And doing a really good job of working their way back into the count after a 2-0. And that's exactly what happens. Low outside corner for strike 1. So now time will be called on the field and a quick defensive substitution at first base. So now currently working with a 1-1 count here, 1 out for Maharashtra. That one misses high and up. And that will be ball 2. Also going to provide a quick update for you. Currently Punjab leading 7-0 over Uttarakhand over on the second ground. So the winner of that will be the other side for the championship game, which will most likely be against Maharashtra at this point. So now 2-1 count. Right in there for strike 2. So another even 2-2 count here for Maharashtra's pitching. We're going to try to add another strikeout to their total today. Swing and a miss, and they get him swinging again. So now that will be 5 strikeouts on the day for Maharashtra's pitching staff. Very effective so far. Now 2 outs on the inning and 1 more out to try and end the game. Right down the middle for strike 1. Maharashtra's pitching, not wasting any time here and just putting it right in there. That one fouled off the inside, jammed on the inside, fouled off to the right side. So strike 2 now. Now only 1 pitch away from ending the game for Maharashtra. 0-2. Swing and a miss, and that will be it. That will be their 6th strikeout of the game.
game for Maharashtra, and that will be it. So now, a final score of 13-0, and it was all Maharashtra in each inning. Pitching staff shut down effort, totaling 6 strikeouts on the day and 13 runs over the course of 3 innings. So now we will get to see Maharashtra in the championship game, as they will be facing Punjab, as they currently lead 7-0 over Uttarakhand over at the second site. So we get to go through the Absolutely. hand clap line here for both teams. Always a good show of sportsmanship here. Absolutely an amazing performance this. As we expected, Maharashtra and Punjab, both in women's and men's. Probably maybe even the men's are expected to have Maharashtra versus Punjab final. We will wait and see. Indeed, we shall, but we will be on the call for that game tomorrow. Now we'll head for a quick break. We will switch out commentators. You'll get to hear from one of our others and get ready for the second game after this. Maharashtra takes the game today 13-0 over Telangana. I've been Eli Wilder here with Piyush Nathani on the DDA streaming network. Thank you all, and we will see you next time.
Good morning, good evening, good night, wherever you are. It's certainly the night for me, but welcome back to day 4 of the Senior National Baseball Championship in Amravati, Maharashtra. It's the hometown team, Maharashtra, taking on Haryana in a semi-final match. We saw the Maharashtra women book their ticket to the championship game in the previous game, and now the Maharashtra men have a chance to do the same thing. The Maharashtra team in orange battling Haryana wearing white uniforms. And we are set for another day of exciting, action-packed baseball. Both of these teams had strong showings in their quarterfinal wins. And we'll see how they stack up against each other. My name is Ryan Oppenheimer, alongside Piyush Nathani. Thank you all for joining us. It's been a historic National Baseball Championship so far. The first time this has been broadcast over YouTube. And a lot of these players getting much needed coverage for the very first time in their young careers. And a lot of fun baseball headed your way. I'm very excited to be here on the live stream bringing it to you. Piyush was there for the previous game where Maharashtra women's team advanced to the championship. And so far, I think it's been pretty clear that Maharashtra is one of the most talented states in the country when it comes to the sport of baseball. What do you expect from this Maharashtra men's team? We've seen them play a couple times here on the live stream, and now they have a new opponent here in Haryana. How do they stack up against each other, Piyush? Hello, very good afternoon to all of you. Thank you so much, Ryan. Well, Maharashtra and Punjab, both the men's and the women's, have been the favorites since the beginning of the tournament. But Haryana definitely, since you asked even on day one who would be the favorites, I told you Haryana is one of the candidates for that one. And we might see a tough opponent for Maharashtra here in the semi-final. Although Maharashtra, I feel, are the favorites, but we will know soon. You never know. It's a semi-final, one-off game. One bad day can really spoil your tournament as well. Well, both of these teams hoping to bring their A game to this semi-final matchup. It looks like Maharashtra will bat first. They are the away team, and Haryana will take the field shortly. These two teams coming off of some dominant wins, but especially Maharashtra, they were able to win 11-1 over Uttarakhand
in their quarterfinal victory over back yesterday. And for Haryana, not quite as much of a lopsided defeat, but a strong third inning against Andhra Pradesh was able to propel them to victory. They were down 2-0 after the first two frames and then hit a 3-run homer as part of that 5-run third inning. The game ended up going all 5 innings. They scored 2 more as insurance in the 5th inning to win 7-3. And the both teams are lining up on the foul lines, getting ready to go. We have seen some complete baseball from this Maharashtra team. They have been perhaps the best pitching team in the tournament so far. They've had multiple pitchers come in and just pump in fastball after fastball. They've had some guys throw some very good breaking pitches. Just a very deep team from end to end. Team captains currently meeting inside the pitcher's circle with the umpires. And you can see these guys are all amped up. This is a little bit different than the pre-game ceremonies you would see before an MLB game. Over here in America, we do see teams line up on the foul lines like this, usually for the national anthem. But the team captain meeting would usually happen at home plate instead of on the mound. It's interesting to see another country's take on this sport. We've seen a lot of talent, a lot of fun so far, and certainly a lot of competitiveness. Shout out one more time to these awesome Maharashtra warm-up jackets that the coaches are wearing. That is just too clean. We've had a lot of very interesting uniform sets so far in the tournament. Teams retreat to their dugouts and we're just about ready to go. They might I'm actually very be fixing an issue here with the pitcher's rubber line. There's people kneeling down, maybe repaving it, re-chalking it. I'm not quite sure what's going on. I'm very sorry, Ryan, but I don't want to hit the commentator's curse, but I can see a lot of dark clouds surrounding the ground. I just hope there is no rain and it will stay away for the game for at least the next 2 hours. Certainly hoping for the best in the weather department. There have been times where the weather has been kind and times where it hasn't been so kind. The first the first day of the tournament, there were a couple games played, but they were all off stream because the broadcast was pretty much rained out. We had a lot of difficulties setting it up in the rain, and ultimately we made the call to cancel the broadcast. It would have caused an electrocution hazard with all the waterlogging and almost flooding that was happening in the area. But thankfully the fields are cleared and we're hoping for another rain-free day of baseball. Maharashtra taking on Haryana. Maharashtra will go to bat first. And the workhorse pitcher for Haryana, Anshul, will take the mound once again, as they are applying some extra chalk and dirt around that slab.
Defense taking the field, playing catch to get warmed up. So this is a really dangerous Maharashtra lineup that we're going to get to see right away. Of course, they won 11-1 in their last outing. They had 9 hits, only 3 errors. They also play some sound defense. 10 of those 11 runs were scored in the second and third innings. Yeah, that just goes to show that they take their time to settle in the game, and once they are settled, it is very difficult to come up against them. Absolutely. And looks like the pitcher getting a couple warm-up pitches in before we officially get underway here in Amravati. It's the men's semifinal. A national championship game berth on the line for these two teams. It doesn't get much bigger than this for baseball in the country of India. And here we go. Leadoff hitter stepping into the box for the first time today. It is Santosh Kachare. Last time out, he had 2 hits and 2 runs scored, 2 singles, and 3 at-bats. No RBI, though. Catcher and pitcher having a word. They'll retreat back to their positions. The games just keep getting bigger here in this tournament. See which team is able to come through in the clutch. Catcher puts on the mask. Batter steps into the righty box. Pitcher awaiting the signal. He toes the slab. Batter in the stance. The wind, the pitch, and here we go. That first pitch is hit to short. It is scooped up. The throw to first is not caught by the first baseman. And Kachare tried sliding into first. Not sure who got there first. He is safe. So on the first pitch, the leadoff man reaches for Maharashtra. So a close play at first already. Some early action. And I think they're going to give him second base freely. Not sure what the call was. Maybe an interference call or an obstruction call from the first baseman, causing the collision. Either way, he's on second base and leading off of it. Here's the next pitch. It's dropped in there over the plate for strike 1. So already Maharashtra has a runner in scoring position with just 2 pitches thrown by Haryana.
Here's the 0-1. Inside pitch fouled away. So Maharashtra's been pretty consistent with their lineup so far. They've gone with the same 9 guys out there, with the exception of the pitchers, for pretty much every game so far. Yeah, and why would they change as well? There's no reason at all to change. And another close play at first. He is safe. And the run scores from second. Heads up base running. And Maharashtra already has a run. Tough decision there for the Haryana defense. They decide to try to get the runner out at first. And when the throw got away, the runner was able to score. Pop fly high in the air to left field. And it finds the grass. Deep in left near the foul line. Throw back in. And that should be a single. Runners on first and second. So a very good offensive start for Maharashtra. Still no outs in the inning. And more contact. This is going to curve foul. So no balls, 1 strike, no outs, and 2 runners aboard. Maharashtra's been aggressive on the base paths, and they've been willing to play small ball. They've hit for power and contact. This is a good situation to bunt in. We'll see what they choose to do. That is high near the helmet of the batter for ball 1. One and one. Anshul getting set and delivering the pitch. Swung at, hit in the air. It's going to land in center field. Shallow center, it skips away, and the runners will advance. A run scores. They were awaiting the play in the field, thinking it may have been caught, holding them up on the bases, but when the ball found the grass, runner was able to score from second, and it's now 2-0 Maharashtra. Straight away on the front foot, Maharashtra. So, some spotty defense in the field for Haryana. They've had chances to record outs on multiple balls in play, but not able to get to any of them. And here is another batter at the plate. Pitch and a swing and a miss. Very good play. Very good pitch. Getting the chase. The count is 0-1.
Runner getting a lead off of second base. And that swung at to third base. And that should be fair or not. It's just foul. And the runners retreat. Either that or the bases are indeed loaded now. The graphic still says no outs. I think that was a fair ball and it was a single. So the bases loaded, no outs. And a big hack and a miss for strike one. Maharashtra with a chance to break this game wide open in just the top of the first inning. Pitch from Anshul gets away from the catcher. He has to go back and get it. And Anshul covering home plate, I think, is going to keep the runners where they are. One ball, one strike. At bat continues here. That pitch is upstairs and misses for ball two. Getting set for the next pitch. And here it is. And another swing and a miss. Evens the count at 2 apiece. So Anshul with a chance to record a strikeout. That would be a huge spot to do it in. Right now he's in some big trouble. Bases loaded, no outs. Here's the pitch. And he gets a hold of it. That is into center field. It lands in front of the center fielder. And the runners will advance one base, so it's a single that scores a run. 3-0 Maharashtra in the lead. And still no outs. Excellent job by the Maharashtra hitter going down and getting that pitch low in the zone. And a very good job playing that ball from the center fielder. Able to play it on a short hop and immediately get the throw back in. In fact, they got a Making couple sure of only runs one there. score. For nothing Maharashtra. And that is another wild pitch. So runners on first and second, no outs. It was a wild pitch, but he swung at it anyway, so it is a strike. Squaring to bunt. He makes contact, and it curves outside third base. So that's strike two. Anshul trying to get the first out. He's got a favorable pitcher's count. And he nearly hit the batter. Did it hit the bat? It may have hit the bat instead of the batter, even though it was inches away. And I think that's going to be a foul ball.
He's walking off. And he'll step back in. So a lucky break for Anshul right there. Nearly issued a free pass with the hit by pitch. And he nearly hit the batter again. This is another wild pitch, skips away, and the batters will advance. The runners will advance, excuse me. Runners on second and third. Count, I believe, is now 1-2. Or 2-2, excuse me. It is 2-2. Still a chance for a strikeout. No more double play chance, though. Squaring to bunt, pulling back in time. And it's ball 3. Good eye there. You don't want to have an unsuccessful foul bunt attempt with 2 strikes. That would be a strikeout. One of the more peculiar rules of the game. So a very risky move to bunt with 2 strikes. We'll see if he tries again. He does, and it is a fair ball. The safety squeeze is successful. The runner scores from third on a close play at home plate. The throw gets away from the catcher, and it is now 5-0 Maharashtra. Still no outs. An Not the best of the exciting throw of play. that one. Not the best throw. You're right, Piyush. Nowhere near where it needed to be. And the catcher, I would argue, was not where he needed to be either. He was in front of the plate, not in position really to make any sort of tag. So runners now at the corners with 0 outs. Maharashtra could put this game away already. A rough outing for Anshul. He's losing control. Nearly hit a couple batters. And he's had plenty of wild pitches. The defense has also not done him any favors. And this time, the batter's showing bunt all the way, and the pitch comes right at his head. He has to dodge it. One ball, no strikes. 2 runners threatening. A swing and a grounder past the shortstop. And it's past the left fielder as well. It's going to go all the way to the trees near the wall. And I'm sure those 2 runs are going to score quite easily. A 7 spot now put on the board by Maharashtra in the first inning. This is a disaster for the Haryana defense, Piyush. Yeah. Long way back in the game already, yet to register the first out. Since the beginning, Maharashtra have been right on top. You got a feel for Anshul still on the mound. This has been their workhorse pitcher. Last time I watched this team play, Anshul was on the mound for all 5 innings, and he gave up 7 runs to. Well, excuse me, he gave up 3 runs in the win. But he hasn't really been able to take a break. Typically in baseball, you see a starting rotation where guys are able to get rest, and now we finally see a pitching change.
There is a new pitcher out on the mound for Haryana. I believe it is Raju Rajan. And he gives up a pop fly. It's into center field, hit hard and far, caught. And the runner will tag up and score from third. An eighth run gets across for Maharashtra. At least they finally get their first out of the inning. Haryana does. But it is a sacrifice fly. Yeah, the change in the pitcher has worked somewhat, you might say. They are able to get an out. We'll see what Raju Rajan can do for this team. Has a quick delivery and another hard hit ball. And it is off the wall. It bounces pretty far back into the field. And the runner scores from third. The throw is bobbled and fumbled away by the second baseman. Runner will stay at second. It is a double, scoring the run. And it is now 9-0 in the top of the first. Maharashtra putting a beating on right now. More contact, and it's past the shortstop into left field. The runner rounding third. He will score easily. And if I'm not mistaken, I think that is 10 runs in the inning by Maharashtra. High fives in the Hari- dugout for the run. Score still says 9-0. Haryana cannot believe what is happening with them right now. They could have never even imagined this position. Well, the onslaught continues for Maharashtra. Runner steals second. Score 9-0 Maharashtra. Not letting up early in this ball game. Another steal attempt, and I think they may have got him. It was a very good throw from the catcher. And they did. Or did they? I think they called him safe, actually. It was a bang-bang play. Good jump from the runner, good throw from the catcher. And it's another stolen base, another runner in scoring position for Maharashtra. Another pitch just under the zone, downstairs. Two balls and a strike. Runner taking off for third. He's in there. So it's 3 balls and a strike now with a runner on third. Swing and a miss, and the count is full.
So Raju Rajan for Haryana looking to get the second out of the inning. It's been a long one. And jammed and hit into right field. It is in the grass. Chase down. Another run scores and a stand up double. And now that is 10 runs scored in the inning. This is pure dominance right now. What do you think, Ryan? What can Haryana do in this position for themselves to change their fortunes? Man, not much. I mean, the damage has been done at this point. Maharashtra asserting their dominance. But for Haryana, you just got to be able to make plays in the field. Not every ball is going to be hit out of the park. Not every ball is going to be hit in the gap. You got to be able to make the play when the ball is hit right at you, and they haven't done that in this particular frame. No signs of stopping. And I believe that's a foul ball. How will Haryana find a way to end this and get their offense out? And a foul tip into the backstop. Makes it now 2-2. So Haryana has made a pitching change, and they're hoping that this new pitcher is able to get them out of this disaster. That's a high pop fly. It will be caught. The shortstop ranging back into the outfield to make the play, and that's out number 2. Yeah, for the second time, the change working for them. And you can see the Maharashtra coach not happy at all, even after leading 10 to nothing. He wants his players to score more runs. Well, it's got to be that type of coaching that's gotten these players to this level. They have been truly a sight to behold, and a big reason is because they accept nothing less than excellence here out on the field. 2 outs, runner on third, in the middle of a 10-run avalanche. Here's the 0-1 pitch. It's upstairs for 1-1. Here's the next one. It is golfed at and sent high in the air, and it lands in the outfield. Left center gap. Left fielder picks it up, chucks it back in, cut off, near short. And that is another run scored. 11 runs in the top of the first inning. It is a 2-out triple. Well, yeah, it is looking like a cricket score now for Maharashtra. Tell me about it.
And that is a foul ball to the third base side. The Maharashtra women's team enjoying the show that the men's team is putting on. Shouts out to the camera team. They've been able to capture so many genuine, ear to ear smiles. All these players have just been having so much fun in this tournament. But let's be real, everything's more fun when you're winning, especially when you're winning by 11. Runner on second, excuse me, it was a double, not a triple. Taking a lead. Here's the pitch. It is skied in the air and foul. No balls and 2 strikes. And the pitch is over the head of the batter. That's ball 1. Runner at second, able to steal third, by the way. 1-2 pitch. Hit high. Does it have the carry? It is fair. Off the glove of the left fielder. And the run will score easily from third. A 12th run across. That was inches away, it looked like, from being a foul ball. But left fielder trying to make a play. Bounced off his glove. And just a nightmare defensive inning for the starting 9 here for Haryana. A crooked number. They just get better and better, don't they, Maharashtra? They have been perhaps the most impressive team in the tournament so far. Punjab has certainly put their power on display, but this Maharashtra team, they do it all. They have speed, power, contact, pitching, defense. I mean, there haven't been many other teams that have been throwing runners out trying to steal bases. Maharashtra was actually able to do that earlier. They have been excellent in all departments, you must say. And they certainly have to be benefiting from the friendly confines of their home state. I I have to apologize. I'm not sure how long I've been muted here. My mic is back on, everybody. I apologize for that. Not much has changed here outside of the inning finally being over. It is a strikeout from Raju Rajan to end the inning after 12 runs score.
A ridiculous offensive showing so far in the top of the first by Maharashtra. And finally, we'll get to see their defense take the field. Haryana has their work cut out for them if they want to come back. Down 12 runs after half an inning. We'll be back for the bottom of the first after this. Welcome back, everybody, to Amravati. And so far, it has been all Maharashtra, putting up 12 runs in the top of the first. And here we go in the bottom of the first, Haryana taking their first at bats of the game. And if their defensive showing is any indication, it just has not been their day. And well, there is a hard hit ball to left field that sneaks past the left fielder. He's going to have to find it in the bushes. He's looking for it. I'm not sure. He finally finds it, and he gets the throw back in, and the runner is able to round the bases. He touches them all. A little league home run in the most incredible and entertaining of fashions. With the help of some greenery, Haryana gets their first run on the board. A leadoff inside the park home run. How about that? Just the start that they were hoping for. An immediate run on the board. Absolutely, and they didn't even let me catch my bearings here. I wanted to pause for a moment and introduce a very special guest into the broadcast. We have a third commentator here joining the live stream. I wanted to introduce Sumit. Sumit is a Hindi broadcaster that is on the ground in Amravati. He has been witnessing this tournament firsthand and calling it for some of the local listeners and viewers. But welcome, Sumit. It's nice to meet you. Pleasure to have you on the DDA live stream. And from what I understand, Sumit speaks Hindi and Hindi only. I want to give him a chance to call this game. Piyush, I know you know both languages. I appreciate you being able to act as an interpreter here. But if you're able to extend my warm regards to Sumit and tell him that he has the stage right now. Yeah, definitely. Sumit, you can be on board. Hello.
Hey, Sumit, it's nice. It's nice to speak with you. सुमित जी, क्या हमें आप उधर का माहौल बता सकते हैं? मैच जिताए हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए। काफी नाम है इनका जो महाराष्ट्र के पिचर है। काफी पीछे हो गई हरियाणा की टीम, क्योंकि पहली इनिंग में महाराष्ट्र ने 12 रन का स्कोर बनाया है और अभी 1 रन है हरियाणा का। और पहला सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं, हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र। और इसके बाद आप देखेंगे दूसरा सेमीफाइनल है जो कि एमपी का और पंजाब का है। बॉल हाई, बॉल टू, स्ट्राइक वन। स्विंग, पॉकेट, 2-2। फुल काउंट बोथ साइड। काफी अच्छा वेदर है यहाँ अमरावती का। बादल छाए हुए हैं लेकिन बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश भी आ जाती है। पिछले 2-3 दिन से हल्की फुल्की बारिश, और कल शाम को काफी तेज बारिश की वजह से मैच रोकने पड़े थे। काफी अच्छे हिट, लेकिन सीधा सेकंड बेस खिलाड़ी के हाथ में और उन्होंने फर्स्ट पे दी और बल्लेबाज आउट। इनिंग चेंज। महाराष्ट्र की टीम ने एक ही रन बनाने दिया हरियाणा की टीम को। Well, I got to say, Sumit, you got a lot faster of an inning than we did. Maharashtra making quick work of Haryana. Maharashtra has been absolutely dominant. Piyush, if you're able to translate a question for me here, I want to ask Sumit about what's been able to make Maharashtra such a great team in this tournament. Just from someone who's been able to watch them firsthand and how they interact with each other as a team, what's been the magic weapon for them so far? सुमित जी, जी। रायन जी पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन-सा चीज़ है जो जादू की तरह काम कर रहा है महाराष्ट्र के टूर्नामेंट में आपके हिसाब से? जैसे कि आप सामने से देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की टीम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। काफी सालों से इकट्ठे खेल रहे हैं, उनका एक बैच है, यानी कि एक ही ग्राउंड के सभी बच्चे हैं। और कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। जो कोच है उनके, जो पहले भी अपनी टीम को खेलते आए हैं और अभी भी अपनी टीम के लिए कोच बने हुए हैं। पहले खेलते थे महाराष्ट्र के लिए, लेकिन अब कोच बने हुए हैं। सभी का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसकी वजह से एक प्लस पॉइंट है महाराष्ट्र के लिए। वो सीनियर नेशनल में एक बेस्ट टीम है अभी तक की, क्योंकि एक तरफा मैच जीते हैं इन्होंने महाराष्ट्र ने। Ryan, so he's trying to say that they have their combination since quite a few years now,
They are playing since quite a while together, and the coach has been the same, and the players have been the same. So therefore, they have that advantage of continuing the same way that they have been doing it in the past. Yeah, that makes a lot of sense. I think continuity, consistency is one of the most important things for a baseball team, and they certainly play like a cohesive unit. Everyone seems to be each other's friend, at least on the baseball काफी field. अच्छा And हिट, लेकिन मिस किया है हरियाणा एक जर्सी नंबर 12 ने। काफी नासमझी दिखा रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी, एक दूसरे को वाइल्ड थ्रो फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र काफी अच्छी बढ़त बना चुका है गेम में। 12 रन बेसबॉल में बहुत हो जाते हैं, क्योंकि कई बार इतने मैच खिंच जाते हैं कि एक एक रन से ही टीम हार जाती है। और ये 12 रन और 1 रन काफी है। सेमीफाइनल का मुकाबला है ये। डबल प्ले का चांस था, लेकिन मिस किया। एक ही आउट हुआ है, जो कि हरियाणा का जो सेकंड बेस पे पहुंचने वाले थे उन्होंने आउट लिया उसको। उनकी एक ही नीति बनाई कि पहले हम एक खिलाड़ी को आउट करते हैं। छोटे कद काठी के खिलाड़ी, लेकिन काफी दोनों ही बैटिंग में बेहतरीन हिट लगाकर अपनी टीम के लिए दोनों ही रन काउंट किए थे इस खिलाड़ी ने। जितनी छोटी कद काठी के खिलाड़ी हैं, उतना ही तेज तर्रार इनका स्विंग है। स्ट्राइक, सेफ ऑन सेकंड, स्टील करके पहुंचे सेकंड बेस that पर। was close. Very good throw from the catcher there. हरियाणा के कैचर सेबी आलम। सुमित जी, जैसे कि आप वहाँ पर ग्राउंड पर है, आप हमें बता सकते हैं उधर का माहौल कैसा है? माहौल काफी, सेमीफाइनल मुकाबलों में तो माहौल और गर्म हो जाता है इधर, क्योंकि इन्हीं 2 मैचों से डिसाइड होता है कि कौन फाइनल पहुंचेगा और कौन कहां तक पहुंचेगा। ये दोनों ही जो मुकाबले हैं आज के, काफी माहौल गरमाया है। इसके बाद इस एक और मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, पंजाब भी और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भी। दोनों के ये मैच तो लगता है एक तरफा हो ही गया है। 12-13-1 हो गए, सॉरी माफ कीजिएगा, 13-1 हो गया है। और अगले मैच सेमीफाइनल का डिसाइड होगा। मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र तो पहुंच ही गई है फाइनल में। अभी उन दोनों में और देखा जाएगा कि कैसा माहौल बनता है उस ग्राउंड पे। जी हाँ, पंजाब की साइड से हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा गर्मा-गर्मी होती ही है। हाँ, कल भी एक मैच में ऐसे ही हो गया था, लेकिन मैच के टाइम पे होता है। लेकिन वैसे सभी एक दूसरे का जानकार, सब नॉर्मल है, ऐसा तो मैच में चलता रहता है। इन द एयर एंड फाउल इट। ये जो महाराष्ट्र के कोच है नंदन, काफी सीनियर खिलाड़ी रहे हैं ये, जो कैप में है अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। काफी इंटरनेशनल भी खेले ये हमारे, अपनी टीम के लिए काफी सालों से कोचिंग दे रहे हैं। अपनी टीम से जुड़े हुए, लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी प्रैक्टिस, उनका कॉम्बिनेशन बनाने में इनका काफी हाथ रहा है, जो आप देख रहे हैं। क्योंकि
कोच के वो जो एक इशारे से ही बंट करके अपने अगले खिलाड़ी को अगले बेस पर भेज देते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन है टीम का आपस में। ये काफी महत्वपूर्ण रहता है बेसबॉल में, जहाँ पर खेलने के लिए सिर्फ 7 ही गेंदे और बैटर के लिए तो 3 ही है। उनमें ही अपने अपने साथी को एडवांस करने के लिए एक कोच का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल देयर बिल्कुल। हैज़ टू बी दैट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लेयर्स। मैच से पहले कोच समीक्षा करता है दूसरी टीम की कि किस प्रकार दूसरी टीम खेल रही है, हमें किस प्रकार एक रणनीति बनाते हैं कि हमें कहाँ एडवांटेज लेनी है और कहाँ हमारी डिसएडवांटेज है, तो हम उसको पूरा कर सके। यही एक कोच का मेन कारण है। ग्रेट हिट बाय शॉट स्टॉप, सेफ ऑन फर्स्ट, सेफ ऑन थर्ड, रन काउंट। ये एक गलत थ्रो जो इधर से उधर एक अच्छा कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से, गलत कॉल की वजह से ये रन काउंट हुआ है। टाइम हरियाणा के द्वारा लिया गया है। अब कहीं ना कुछ गलती कर रहे हैं हरियाणा के कोच को। समझना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही। काफी आगे बढ़ चुकी है महाराष्ट्र की टीम। देखिए उनका खेमा कितना खुश है, क्योंकि सेमीफाइनल वो आसानी से जीत रहे हैं। 14-1 का स्कोर। Yes, there seems to be a panic in the Haryana squad, struggling a lot. Yeah, it just seems like when it rains, it pours. As soon as the first thing went wrong, things just kind of spiraled for Haryana, and now it feels like they can't do anything right. They're trying to regroup here with a little infield meeting. I gotta say, one of the best parts about having Sumit here on board is the enhanced audio experience. We get to hear the sounds of the game from someone who's there on site. We get to hear the crack of the bat and the cheers from the crowd. It's made for a much more engaging experience, I think. So thank you for joining, Sumit. सुमित जी, रायन जी बोलना चाह रहे हैं कि आपकी वजह से हमको ग्राउंड पे स्टोरी सुनने मिल रहा है, जो हम लोग के लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रख रहा है। उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, जो अभी मेरे को मौका मिला है आपके साथ कमेंट्री करने का। हालांकि अभी इतनी कुछ आवाज आ रही है सर। हाँ जी, आ रही है, बोलिए ना। बॉल 1। थोड़ा इधर नेटवर्क का काफी इशू है, क्योंकि ग्राउंड में बैठे हैं। और माफी चाहूंगा, इधर काफी इशू है थोड़ा सा। Sumit is trying to say that there is a lag in his connection because he's on the ground, so he's having those network connectivity issues. Hence the slight delay in whenever he speaks. Oh, that's all good. We all have a slight delay from our respective locations. But yeah, any audio is better than no audio for sure. काफी अच्छी हिट लगाई पहुंची है, लेकिन I had another question for Sumit, and it's regarding the players and like the individual standout performers, because a challenge for us is identifying the players from afar. Haven't been able to really flesh out the narratives as much as we have wanted to. Uh, we understand that there are statistics being taken and
There is ways for us to identify players. There was a survey that collected player information, players' identities, the names, numbers, and some personal information as well, like even their favorite food and their favorite baseball player, things like that. But I guess my question for Samit, for someone who's able to watch players up close, what have been his standout individual performances so far, and who do you think are the best players in this entire tournament? सुमित जी, रायन जी पूछना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से ये टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन किसने किया है? और अगर कोई एक नहीं, तो जो भी 3-4 नाम हो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ी दिक्कत हुई है जानने में कि कौन-सा प्लेयर कौन है। हमें सिर्फ़ जर्सी का नंबर दिखता है, इसके लिए। अभी अभी इसके ऊपर है ना, जैसे डीडीए काम कर रहा है, क्योंकि अभी एक एप्लीकेशन हम चालू कर रहे हैं। अभी वो ट्रायल के लिए हम इस नेशनल में लेके आए हैं। आने वाले टूर्नामेंट में हम कोशिश करेंगे कि आप यूट्यूब पे ही खिलाड़ी का नाम, उसका सारी चीज़ें देख सकेंगे, नाम नंबर जर्सी जैसे भी कुछ है। और हर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का स्टैट तैयार कर रहे हैं उसका, कि आपको भी पता लगता रहे कि किस खिलाड़ी ने कितना होम मारा है, किस पिचर ने कितना स्ट्राइक आउट लिया है, किसने डबल प्ले लिया है। अभी वो चीज़ हम इधर ट्रायल के लिए लेके आए हैं। आने वाले समय में आप ये सभी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं कि एक पर्सनल खिलाड़ी के स्टेट के बारे में पता चलता रहेगा आपको भी। So what Sumit is trying to say is, DDA has come up with an app in which they are trying to update all the players' individual performances, their scores and cards and whatever required. But that will be live from the next tournament itself. This is just a trial. So once it is live, it will be shown on YouTube as well, and then it will be much more easier for us to understand who is who and how are they performing and everything. Boy, I am looking forward to that. That is going to be a very nice addition to our broadcasting system here. Um, and there's so many players here, so many stories. I'm sure every one of them would love to be, I mean, interviewed personally, and everyone would love to be able to talk about themselves and what's gotten them to this point. And I'm excited to be able to do that over the course of my time with DDA and my time calling these tournaments. Maharashtra continuing to put their foot down on Haryana. अब तो एक मैच औपचारिकता ही बची है हरियाणा के लिए। काफ़ी आगे निकल चुकी है महाराष्ट्र टीम, लेकिन अपनी गेम की स्किल महाराष्ट्र दिखाती हुई अपना एक बैटिंग लाइनअप जो कि बैटिंग के लिए आए हैं, ताकि आगे आने वाले मैचों में उन्हें इसके सामना ना करना पड़े। किसी भी कोई स्विंग फेंक रहा है या कोई इनसाइड है पिक्चर के बैटिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अब औपचारिकता ही महाराष्ट्र देख रही है इस मैच को, कि हम आने वाले मैचों में जो हमें सामना किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बस इसी की तरह खेल रही है हरियाणा के साथ, लेकिन हरियाणा फाइट कर रही है महाराष्ट्र के अगेंस्ट कि हम कोई ना कोई बड़ा स्कोर, किसी इनिंग में बड़ा स्कोर हासिल करें। Yes, game time practice is very important as well. They are taking the best advantage of that with this lead, as they can experiment a few things before the big final. Rightly said, Sumit. Yeah, I mean, they have enough of a cushion right now that they're able to just experiment, do pretty much whatever they want. Not sure what's holding up the game right now. It'll be a pitching change. And we get to see a lefty here, number 22.
अभी महाराष्ट्र ने अपना मेन पिक्चर है जो वो फाइनल के लिए बचा के रखा है, क्योंकि इस मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बची है। जो इनका वार्म अप पिक्चर है शायद उससे पिचिंग करवा रहे हैं ये। अभी जो इनका मेन पिक्चर है उसने अभी ज्वाइन नहीं किया है मैच को। Sumit, what Ryan is trying to say is the main pitcher of Maharashtra has not come on board yet. He will be नहीं, used in the final directly. Interesting. काफी अच्छी हिट लगाई, काफी दूर गई है, टू बेस। कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे हरियाणा टीम के खिलाड़ी कि हम स्कोर का मार्जिन घटाएं, क्योंकि इसके बाद अगर हरियाणा कहीं ना कहीं ये मैच हारती है, और क्योंकि इन्हें अभी हार्ड लाइन के लिए एक मैच और खेलना पड़ेगा। चोटिल हुए हैं जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो सेकंड बेस पर पहुंचे थे। They are all smiles here, the Maharashtrian team, enjoying themselves out there. मैच रुका लेकिन सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ गंभीर चोट नहीं लगी है खिलाड़ी को। I apologize for any name mispronunciations that I have done so far in this broadcast, or will continue to probably do. You know, I can only do so much. I don't know Hindi. Maybe I'll learn a little bit during my time here at DDA, but I do have access to roster sheets here, and the lefty pitcher currently in the game, his name is Pratik Mahadeo Gaikwad. You are absolutely spot on, Ryan. You have not made any mistakes so far in pronouncing these names. Thank you, Piyush. I'm trying my best. एक इस बेसबॉल में लेफ्टी पिचर के लिए एक एडवांटेज होती है, जो कि बाहर की बॉल अंदर की तरफ स्विंग होके आती है। आप देख रहे हैं जैसे लेफ्टी है, अभी पीछे पिच की थी जो बाहर से प्लेट के अंदर आई थी। काफी मुश्किल रहता है लेफ्टी पिचर को हिट करने के लिए, एक एडवांटेज रहती है बेसबॉल में। जी हाँ, बिल्कुल। हमने ऐसा क्रिकेट में भी देखा है काफ़ी कि लेफ्ट आर्म पेसर्स को राइट हैंड बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होती है। उसी तरह बेसबॉल में भी उसी तरीके से हो जाता है। Ryan, what Sumit is trying to say is the left arm pitchers are very difficult to face as the ball keeps on swinging inside for the right handers. Yeah, absolutely. Especially when the pitcher has a good cutter. I think that's a really good weapon for a left-handed pitcher facing a righty. When you're able to get it high and inside on a batter, it's hard to attack. And there it is. He induces weak contact on a pitch high and inside, right as I say that. अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे शायद वही हुआ है। लेफ्ट आर्म की अंदर इनसाइड लगी है बैट के, और वो ग्राउंड में ही बॉल गिरी है। अभी जिसकी बात कर रहे थे, आखिर लगता है कहीं ना कहीं बैटर ने हमारी बात सुनी है और वो करके भी दिखाया है।
क्योंकि नेचुरल स्विंग हो जाती है। जैसे राइट आर्म फेंकता है तो उसकी इन स्विंग बाहर की तरफ होती है, वो आउट स्विंग होती है, और जो लेफ्टी है उसकी इन स्विंग अंदर की तरफ आती है, और वो जो बैट का स्वीट पार्ट है उस पे ना कनेक्ट होकर बैट के हैंडल की तरफ लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। Just as you predicted, the in-swinger making the batter struggle, hitting the top side of the bat. That's why it's very advantageous to have a deep pitching staff that can give batters multiple different looks. And I gotta say, here's another tidbit about Pratik. He knows ball. He watches baseball, and I think it's really cool that his favorite baseball player, according to the survey he answered, is Tarek Skubal, who is another superstar left-handed pitcher in the big leagues. I'd imagine he looks up to him and models his game after him. He certainly looked quite a bit Skubal-ish in this game so far. जी हाँ, बिल्कुल सही। जो प्लेयर को आप चाहते हैं वो प्लेयर की तरह आप खेलना भी चालू करते हैं, और प्रतीक ने वही दिखाया है हमें आज। अभी महाराष्ट्र ने अपना कैचर चेंज किया है, पिचर चेंज किया है, ताकि आने वाले मैच में अगर कहीं ना कहीं मैच फंसे कि हमारे एक पिचर को हिट लग रहे हैं तो वो अपना हिट पिचर चेंज कर सके। मैच में एकदम से अगर किसी पिचर को उतारे हैं तो कहीं ना कहीं वो नर्वस होता है कि कहीं ये दिक्कत ना हो, तो उन्होंने पिचर और कैचर चेंज किया जो कि फाइनल के लिए इन्होंने रखे थे, क्योंकि यस, इस मैच में इतनी कुछ औपचारिकता बची नहीं है। वो सभी अपना ट्राई करके देख रहे हैं कि आने वाले मैच में कहीं फाइनल मैच में हमें कुछ इन सावधानियां जो हमने बरती हैं कि उनकी वजह से हम कहीं ना कहीं मैच लूज ना कर जाएं। yes, it is very important to experiment all the players that you have when you have the opportunity in a lead like 15-1. क्योंकि कई बार मुकाबला इतना तेज हो जाता है, खिंच जाता है कि स्कोर यानी कि 1-0 से ही मैच हार जाते हैं। और इसमें तो काफी रन बन चुके हैं, महाराष्ट्र की टीम ने 15 रन बना लिए हैं। We have got an update from the second semi-final, that is between Madhya Pradesh and Punjab, and surprisingly, Madhya Pradesh are leading that game by 2-0. 2-0 से आगे है मध्य प्रदेश दूसरे सेमीफाइनल में। Wow. Punjab looked pretty good. We haven't gotten to see Madhya Pradesh's men's team so far on the live stream. That's an impressive start. जी हाँ, सुमित जी, आप हमें मध्य प्रदेश टीम के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हमारे लाइव स्ट्रीम में एक बार भी मध्य प्रदेश ने एक भी गेम खेला नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ शेड्यूल बना रखा है कि किस ग्राउंड पे किस टीम के मैच होंगे, और वो शेड्यूल के हिसाब से उनका जो मैच हो रहे हैं वो ग्राउंड नंबर 2 पे है, तो उधर अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। तो ग्राउंड नंबर 1 है जिस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जो सेमीफाइनल देख रहे हैं, पहला सेमीफाइनल। तो इस वजह से जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड है तो उसी ग्राउंड पे उन्हीं टीमों का मैच होता है, क्योंकि ऑफिशियल और जो सारी मैनेजमेंट है उधर भी है और इधर भी है। हाई पिच स्विंग एंड मिस, स्ट्राइक आउट किया महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने हरियाणा के बल्लेबाज को।
जजमेंट I was एक बेसबॉल में एक जजमेंट और एक अपना सहन शक्ति कि मेरी रडार में आएगी तो ही मैं कनेक्ट करूंगा, अगर ऊपर नीचे की पिच पे कनेक्ट करेगा तो मिस हो जाएगी, क्योंकि बॉल फास्ट पिचर इतना इस हिसाब से फेंकते हैं कि देखिए आपने अभी देखा होगा कि स्विंग कहाँ क्या है, ना कोई बॉडी बैलेंस है, ना कोई एंगल बना के मार रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी की। बॉल आएगी, बस एक कंसेप्ट बना के आए हैं कि बॉल आएगी और मेरे को मारना है। इस तरीके से खेले कि सामने वाले खिलाड़ी के ऊपर भी प्रेशर आए कि हाँ मेरी रडार में आएगी तो ही मैं हिट करूंगा इस पिच को। संयम का जी हाँ, खेल है पेशेंस बेसबॉल। बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्राइक। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को चीयर्स कर रहे हैं कि हमारी टीम जीते। लेकिन अभी देख रहा हूँ जैसे कि मैं ग्राउंड में हूँ कि हरियाणा की टीम का खेमा बिल्कुल, जो की टीम है बिल्कुल ही शांत हो गई है, क्योंकि वो अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश है कि जो कि अभी खेलती आई थी, लेकिन काफी अच्छा खेल रही थी हरियाणा की टीम, काफी अच्छे हिट लगाई थी। ओ, काफी अच्छी रनिंग। कहीं ना कहीं ऐसा करके दिखाना होगा कि दूसरी की टीम, महाराष्ट्र की टीम भी सोचे कि हाँ कहीं ना कहीं मैच में वापसी कर रही है हरियाणा की टीम। ये कॉम्बिनेशन है देखिए। अगर कुछ पहले ऐसा करते तो कहीं ना कहीं मास्टर महाराष्ट्र की टीम को भी लगता कि हाँ मुकाबला बराबरी का है, लेकिन उन्होंने पहले ही इनिंग से मैच इतना ढीला छोड़ दिया कि महाराष्ट्र की टीम काफी लीड ले चुकी है। Yes, the dugout will always go quiet when your team is down by 15 to 1. All the loud cheers coming from the Maharashtrian side and not the Haryana side. Totally demoralized the Haryana team. ऐसा लग रहा है अब कि हरियाणा के प्लेयरों ने कंधे घेर दिए हैं। अभी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही बचा है ये इनिंग्स, ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र और कितने रन जोड़ पाएगी अपने 15 पे, ये हमें देखने को पता चलेगा अभी। Just a formality left out now. This could be the final innings of the game for both the sides. 15 to 1 as the mercy will come in after the third inning.
It seems like we have lost Sumit there. As we continue here in this third innings. Hey, everybody. It's Ryan again. I wanted to thank Sumit for joining. I'm not sure if he's going to be able to come back. If he is, we'd love to have him. Not sure if he just disconnected or he left altogether. But either way, we appreciate his presence here on the stream. No more audio, unfortunately. But the score is still the same, 15-1 here in the third inning. We play on. The mercy rule appears to be that the game ends after 3 full innings at minimum if the game is more than a 10-run difference or greater. And right now, this game definitely fits the qualifications. Still 15-1 Maharashtra, and they will slice a ball into right field just inside the foul line. It is a fair ball. And number 23 will take second base for a double. Yeah, it's just a question of how many That more is can they get. Ajay Kedkar with a great base hit to left field. To right field, excuse me. Stepping up now is Aklim with a chance to drive him home. Swings and misses at the first pitch there. Maharashtra seem to have the opportunity to try whatever they can. They can do all their experiments that required, as they are in this massive lead of 14 runs. And that ball eats up the third baseman. Unable to make the play. Runner does stay at second base, but it is going to be a fielding error allowing Aklim to reach first. At this point, Maharashtra's threatening to put up the first 20 piece of the tournament for any team. At least so far with the teams that we've seen. One out in the frame. We've got 2 runners aboard. Here's the pitch. A bunt attempt is right down the third base line, and everybody's safe. It loads the bases. An excellently executed bunt for a hit. And we know Maharashtra can hit it out of the park. They have the power and the skill to do so. Imagine if they were able to get a grand slam here. There will be a pitching change here for Haryana. Excuse me, he's just taking a couple warm-up pitches. I think it's still the same guy. Raju Rajan. And here we go. Bases loaded, 1 out. And a high and inside pitch swung at and fouled away. An unnecessary strike allowed by the batter.
Here's the 0-1 pitch. Swung at, hit to left field, and foul. So the count's 0-2. Batter in a bit of a hole here. Double play is in play. Oh, 2. Outside pitch. He got a hold of it, and it's speared at second. Oh my goodness, I think they got the double play. That's the inning. Wow. Hit it in the perfect spot for an easy play for the second baseman, and the runner couldn't get back to second base in time. This is going to be a really good look at it. Great catch, and he sprints to the bag, taps it with the glove, and that is 2 quick outs. There's a defensive web gem from the Haryana team. Seems like they've been waiting all game to have a play like that. And they finally get one, down by 14. Well, that's a quick top of the third. That is the kind of fortune that they were looking for earlier on. It didn't work out for Haryana, but finally it has, and they now need to score at least 5 runs in this game, in this innings, to continue this game into the fourth one. Well, only one half of an inning left. Maharashtra has their ticket to the championship game all but booked. You can feel it in the air. Only a few spectators in attendance. A lot of them are other fellow baseball players, but a lot of chatter, a lot of excitement audible right now. And the hometown Maharashtra men are 3 outs away from a spot in the championship game, a chance to play for all the glory in the country of India. It appears that Maharashtra is the reigning champion of this tournament. They won the 37th back last year, looking to win another one. हरियाणा की टीम के काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि पहले नंबर के बल्लेबाज हैं सैबी। देखते हैं सेमीफाइनल में अभी तक कुछ खासी हिट नहीं लगा पाए हैं, अपनी टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, चुने हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन फिर से वही नपातो लाइन का प्रदर्शन नहीं कनेक्ट कर पाए और फर्स्ट बेस के हाथों में ही इन्होंने फिर से वही नहीं कर पा रहे अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा मैच है ये हरियाणा की टीम के लिए, ये सेमीफाइनल। फाइनल में प्रवेश करने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं हरियाणा की टीम के। Two outs away. You can feel it in the air. We just have a quick update from the other game as well. Madhya Pradesh leading 5 ग्रेट to हिट nothing. एंड ग्रेट कैच, जो कि सेंटर आउट में बेहतरीन कैच पकड़ी है खिलाड़ी ने, महाराष्ट्र एक खिलाड़ी ने। आप इसका रिप्ले देखेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है।
Man, all अपनी tournament टीम ने long, it's been जान फूंक दी है so इसमें. difficult. It's been so difficult to make catches out deep near the wall. This entire tournament, we've seen outfielders struggle there. But I think we might have seen maybe the best outfield play all tournament long. Look at this. Has to be the catch of the tournament. Excellent slow motion camera work there. And narrowly avoiding the tree trunk. Oh my goodness. Ridiculous highlight there for Maharashtra. I I mean, I don't know what to say. That is absolutely the catch of the tournament. दूसरी टीमों के लिए ये एक कैच मिसाल बनी है कि महाराष्ट्र की टीम कहाँ अपनी जान बिल्कुल झोंक कर इस मैच में कुछ भी कर सकती है. आप फाइनल के लिए तैयार रहना कि हम हल्के में नहीं लेंगे मैच को. And that is the end of the game as well. दोनों ही टीमें लाइन अप हो चुकी हैं क्योंकि महाराष्ट्र ने ये मैच जीत लिया है. Once again, another victory by the Mercy Rule. That catch really tops everything. As even after leading 15-1, they are ready to put their bodies on the line. Even very close to getting hit on the tree, but he did not care. He did not care what the score was. He just went absolutely for it, outstretched, and a superb take. Definitely the catch of the tournament. And I'm going to be thinking about that catch for a long time. If that happened in an MLB game, it would be posted all over the social media. It would be a catch of the year candidate. I think we just saw a special play from a special player and a special team. This Maharashtra team has just been an endless stream of highlights in this tournament, and it's been a pleasure to watch them. Final score 15-1, capped off by that incredible catch out in left center field. And they are headed to the championship game. We still await the result of the other semifinal. Madhya Pradesh, though, currently leading Punjab. Their offense, Punjab's offense has run cold. We'll see what the end result of that game will be. But we know one of the championship contestants, and it will be Maharashtra, playing in their home state. Got a new ad here, and this is something that I've been wanting to talk about for a long time. Diamond Dreams Academy is building India's first Major League Standard baseball field. You see it right there on the bottom. That is one of the most exciting things that Diamond Dreams Academy has in store. They will eventually use it to have their own self-contained league, showcasing the best talent in India that are training with DDA program. That should be ready in October, and I cannot wait to bring that to you all. I will be right here for the beginning of that tournament, and it's just around the corner. But as of now, a successful Senior National Baseball Championship is nearly coming to a close, as Maharashtra will be one of the two teams competing for national glory. One last look at the play of the game, the play of the year potentially. A leaping grab near the wall, manages to maintain possession of the baseball as he takes the tumble to the ground. Excellent performance from Maharashtra once again. And that's going to be the end of this live stream. I want to say thank you again to Sumit for joining us and providing a fresh perspective from the ground. I think a much needed addition to our broadcasts. All of us are coming at you from different locations. It can be a little bit disjointed at times, but Sumit has been able to bring it all together for us and also be able to speak
to the Hindi audience, which unfortunately I'm not able to do at this point in my life. I do want to learn some more languages at some point. But yeah, it's been a blast for myself, Ryan Oppenheimer, for Sumit Pangal, and for Piyush Nathani. This has been day 4 of the Senior National Baseball Championship. Maharashtra victorious in the men's semifinal and in the women's semifinal. We saw their talent on display in both games. And tomorrow, we will have the men's and women's championship games, both involving Maharashtra, right back here on the DBA YouTube channel. Hope to see you all then. Thank you all for joining for the semifinal day. And one last time, so long. Have a great rest of your day. And we will see you right back here after some downtime. Have a good rest of your day. See you soon.
A very good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. We are back here on day 4 of the 38th Senior Nationals Championship of Baseball. A big shout out to DDA, Dynamic Dreams Academy, for putting up this initiative to promote the game of baseball in the country. The two sides playing right now, Telangana and Uttarakhand, they are fighting for that bronze medal. Both of them coming off the back of a defeat very heavily in the semifinals to the hands of Maharashtra and Punjab. This time Telangana on the offense, and that will be out, played in the air, a nothing shot really, not quite able to get the distance or a proper connection. And with that also ends the innings for Telangana. The नेटवर्क तो first नहीं one मिल रहा हूँ ended. फॉलो करना ऊपर फॉलो करने में नीचे नीचे तेरे को ऐसा लगेगा तेरे आसपास का प्लेयर को बता रहा हूँ बाउंड्री लाइन में मत नहीं आई तेरे आसपास ऐसा लगेगा बॉल ऊपर उड़ा है बॉलर पकड़ेगा So we are back here for the Uttarakhand first innings for the bottom first. Uttarakhand on the offense. Telangana being telecasted for the second time in the day. That's given as the first strike. कैम सटा Trying to connect. Play towards the left side of the field. Nicely taken, and she has to go. She has to depart. The first one out for Uttarakhand. Played straight into the hands of the fielder on the left side of the field. Coolly and calmly collected, and an accurate throw to end his place on the ground. दादा अकील 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 आप सभी इस हार्ड लाइन मैच को देख सकते हैं डीडीए बेसबॉल ऑफिशियल साइट के माध्यम से, जो कि अभी अमरावती में हो रहे हैं। हार्ड लाइन मैच है ये, तेलंगाना वर्सेस उत्तराखंड। दोनों ही टीमों में बराबरी का मुकाबला अभी तक। आप जैसे देख रहे हैं कि दोनों ही टीमें अपनी अपनी टीम को चेयर्स कर रही हैं, कि हौसला अफजाई कर रही हैं
कि पोजीशन का मैच है ये। बॉल हवा में और शॉर्ट स्टॉप के खिलाड़ी के द्वारा कैच किया गया और आउट हुआ है उत्तराखंड का बैटर। जी हाँ, ज़्यादा पावर नहीं लगा पाए अपने शॉट पे। बड़ा ही आसान कैच शॉर्ट स्टॉपर द्वारा। सेकंड बेस मिस फील्ड की है और इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तेलंगाना की टीम को। फर्स्ट बेस पर उत्तराखंड के बैट सेफ और जो कि बॉल फॉरवर्ड से बाहर चले गए, उन्हें 1+ यानी कि एक बेस आगे की तरफ भेज दिया गया है। सेफ ऑन सेकंड बेस। पिक्चर रेडी, स्विंग और स्ट्राइक। कैचर ने फंबल किया। थर्ड बेस पर पहुंचे सेकंड बेस के खिलाड़ी। ऐसे बड़े मुकाबलों में छोटे छोटे एरर ही आपकी टीम को हरवा सकते हैं, क्योंकि एक भी रन दूसरी टीम पर काफी भारी पड़ सकता है। फाउल हिट। बैटर बॉक्स में ही जो बॉल थी बैटर को लगी है। प्लेट एम्पायर उसे फाउल हिट दिया। हिट, काफी अच्छी हिट है लेकिन पहुंच नहीं पाए। लास्ट अवे था और साइड चेंज है। Both the sides scoring nothing in the first innings. Score still nil-nil. Very close this time to get the opening run, Uttarakhand. अरे स्कोर भी हाँ, अरे तो भेज तो सही दिख नहीं रहा है। नहीं ना, सबसे बोलना चाहिए अरे तो लिंक वापस हुई। Swing and miss. Strike one.
बॉल वुमेन्स के मैच काफ़ी लंबे चलते हैं क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ और वो हिट, लेकिन देखिए मिस फील्ड किया, फिर से वही नकारात्मक फील्डिंग। एरर्स, जितने भी एरर होंगे सामने वाली टीम को उतना ही फायदा होगा। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि एमपी ने मैच जीता उधर से दूसरा सेमीफाइनल 8-1 के स्कोर से। अभी आप फाइनल मुकाबला देखेंगे महाराष्ट्र वर्सेस एमपी का, जो कि कल डीडीए से के लाइव प्रसारण में आप देख सकते हैं। एमपी ने अपना मुकाबला 8-1 से जीता है, और जो कि पहला सेमीफाइनल था महाराष्ट्र वर्सेस हरियाणा का, महाराष्ट्र ने वो मैच 15-1 से जीता था। अभी जी हाँ हार्ड भाई। लाइन का इस मैच के बाद हार्ड लाइन का दूसरा मुकाबला होगा मेंस सेक्शन में, पंजाब वर्सेस हरियाणा का हार्ड लाइन का मैच होगा, जो आप डीडीए के लाइव माध्यम से देख सकते हैं। जो भी फाइनल मुकाबला होगा वो कल लाइव होंगे। बोथ प्लेयर आर सेफ ऑन फर्स्ट एंड सेकंड। बॉल अच्छी तरीके से कैरी नहीं कर पाए, नहीं पकड़ पाए। पहले बॉल को पकड़ना चाहिए फिर थ्रो करना चाहिए, वो बॉल ही समझ नहीं पाई कि थ्रो करें या बॉल पकड़े। इसी मंजस के बीच में सेफ ऑन सेकंड तेलंगाना के 2 बेस लोड। फाउल हिट। अनदर फाउल हिट। स्ट्राइक 2। टाइम लिया तेलंगाना के कोच ने अपने खिलाड़ी को समझाते हुए कि स्ट्राइक 2 होने के बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या रणनीति बनाई है। अभी इस पिच पर डिसाइड होगा कि कोच की रणनीति काम आती है या नहीं। बाउ। हवा में गेंद, हो। थर्ड बेस ने पकड़ा है गेंद को, छूट गई थी। यही कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे की कॉल ना समझ पड़ने के कारण होता है। अगर आप कॉल करते हैं तो आपका खिलाड़ी आपके इशारे को समझ जाएगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में ही देखिए किस प्रकार, जैसे क्रिकेट में कैच करते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार ये कैच पकड़ा गया है। और लेकिन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और फर्स्ट और सेकंड बेस दोनों ही सेफ हैं। इसमें एक रूल भी है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड बेस लोड है और नन अवे या वन अवे है, इन फ्लाई का रूल, इन फ्लाई रूल में अगर बैटर ने हिट किया तो ऊपर, जैसे अभी देखा था आपने कि हवा में गेंद गई है, तो बैटर ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। स्ट्राइक।
1-1. काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल मैच है। महाराष्ट्र वर्सेस एमपी, दोनों ही टीमें अपना मैच जीतते आई है, काफी अच्छे मार्जिन से जीतते आई हैं। हाई बॉल पर स्विंग किया और स्ट्राइक। ग्रेट हिट, कैच। टीचर ने ही जाने नहीं दिया कैच को और अपने डगआउट में वापस भेजा तेलंगाना के खिलाड़ी को। काफी अच्छी हिट होती है पिचर के ऊपर से हिट लगाना, और दोनों ही बेस लोड हैं, सेकंड और थर्ड बेस लोड है। अगर कहीं भी कोई चूक हुई तो काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा उत्तराखंड की टीम को। साइड 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 और उनका वो सेंटर रुकम फिर बाजू में जल्दी फिर बाजू में स्ट्राइक। साइड। अरे आवाज देना उधर से बैठे बैठे। एडवांस करने की कोशिश कर रहे थे थर्ड बेस के रनर, और देखिए ये एरर, ये गलतियां आपकी टीम को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। टाइम कॉल किया है तेलंगाना के कोच ने। बहुत ही बड़ी चुनौती मिस कर दी उन्होंने, ऐसा लग रहा है। अनिल क्या नाम है अनिल 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 वो सब मुंह पे तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लगता है, उसी रूल को क्लियर कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल्स और तेलंगाना के कोच। उत्तराखंड की टीम तैयार हो गई है वापस से ऑफेंस में आने के लिए। हाँ शायद हाँ ये लास्ट अवे था और उन्होंने ये मौका खोया है। तेलंगाना की टीम ने उनके लिए स्कोर करने का एक अच्छा मौका था ये, क्योंकि एक हिट पर उनके दोनों स्कोर काउंट हो सकते थे। एम्पायर ने आउट दिया है, लेकिन ऑब्जेक्शन किया है तेलंगाना के कोच ने। मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन से कुछ फर्क पड़ने वाला है। एक बार जो अंपायर ने डिसीजन दे दिया वो दे ही दिया, मानो।
लगता है क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सभी ऑफिशियल्स अपनी पोजीशन पर जा चुके हैं वापस। इनिंग चेंज हो गई है, तेलंगाना की टीम अंदर फील्ड पे पहुंच चुकी है। सेकंड बॉटम। लेकिन आउट हो गया तुम वाइड आउट। मेरा मन नहीं ऐसा लगता है, मन नहीं ऐसा लगता है। जैसे देखो ना कुछ बेटर पोजीशन। ग्रेट हिट, सेफ हिट, काफी अच्छी हिट, थर्ड बेस के ऊपर से ही। स्कोर करने का उत्तराखंड के पास बेहतरीन मौका। 99 फर्स्ट बेस लॉट। बैटर को काफी कॉन्फिडेंस था कि ये बॉल ही आएगी। कोई पोस्टर चेंज नहीं किया, ना कोई पोजीशन में आए, खड़े रहे, लेकिन बॉल और सेफ ऑन सेकंड। अपनी जो टीम के फर्स्ट बेस्टर होते थे उसके लिए उन्हें एडवांस करने के लिए ये हालांकि किया जाता है। सेफ ऑन थर्ड। काफी गहरा मौका थर्ड बेस पर और 99 है। ग्रेट हिट। ओ, बॉल इन प्ले का इशारा है अभी तक। उत्तराखंड की टीम ने एक रन बना लिया है और दूसरे खिलाड़ी सेकंड बेस पर से पहुंचे हैं। टाइम कॉल किया है ऑफिशियल्स के द्वारा। ऑस्कर सेंटर का पावर अरे तुम मैं जाता हूँ छिटक मत। अरे यार ये राजू पैसा ऐसा दिखेगा ना, पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए तो यार
ये तो नहीं करोगे नहीं तो आपको मौसम से जुड़ी इस मैच में लगता है दखल अंदाजी होना शुरू हो गई है। इंद्रदेव काफी खुश हो गए हैं इस मैच से। हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है मैच में। सेफ ऑन थर्ड। मौसम का रुख बदल चुका है। अच्छी हिट लगाई है लेकिन हवा में है और शॉर्ट स्टॉप के खिलाड़ी ने इसको पकड़ लिया है। शानदार कैच। हिट लेकिन बंट का काम किया इनके हिट ने। बॉल की तरफ देखे लेकिन सेफ, थ्रो नहीं फेंक पाए। रन काउंट, उत्तराखंड की टीम ने 2 रन बना लिए हैं। हिट लगाने के चक्कर में बंट लगा बैठे और वो उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा। तेलंगाना की ये गलतियां उनको बहुत ही भारी पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि हार्ड लाइन का मैच है। अगर आप ये मैच हारे तो टूर्नामेंट से बिना ही पोजीशन लिए बाहर हो जाएंगे। देखिए गलत थ्रो, लेकिन रनर नहीं दौड़े क्योंकि काफी हष्ट पुष्ट खिलाड़ी हैं ये, नहीं दौड़ पाए। आउट होने के चांस ज्यादा थे। उनके कोच ने उन्हें मना किया क्योंकि एक एथलीट जो कि वो ही इस तरीके के जोखिम उठाता है खिलाड़ी। एक स्टीलिंग वाला खिलाड़ी ही, देखिए सेकंड बेस स्टील किया है, थ्रो किया, लेकिन पहुंचे। उन्होंने बात को झुठलाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये, और सेफ ऑन सेकंड। जी हाँ, पहले बेस से दूसरे बेस जाना स्टील करना थोड़ा आसान है क्योंकि कैचर को बड़ा ही लंबा थ्रो करना रहता है। नहीं, इसमें बता दें कि कैचर और पिचर का कॉम्बिनेशन होता है कि हाँ फर्स्ट बेस लोड है, पहले उसको चेक करता है पिचर। पहले उसको चेक करेगा कि कितनी लीड है, उसको कैचर बताएगा कि हाँ आप चेक ले सकते हैं फर्स्ट बेस पे। अगर उसको पता है कि हाँ भाई थ्रो आ सकता है तो उसकी लीड कम हो जाएगी जो रनर है फर्स्ट बेस पे। और क्विक पिच डाली जाती है। अगर फर्स्ट बेस लोड है तो क्विक पिच डाली जाती है, उसमें इतना टाइम नहीं लिया जाता क्योंकि फर्स्ट बेस का रनर सेकंड बेस पे दौड़ने के लिए, तो इसी के बीच में कैचर को टाइम मिल जाता है कि वो पहुंचने से पहले ही बॉल उधर फेंक सके। हिट लगाई, सेकंड बेस की तरफ देखा और सेफ ऑन थर्ड। बैटर आउट है। वो भी थर्ड बेस लो। 2 रन की लीड हो चुकी है उत्तराखंड की।
कॉम्बिनेशन का खेल है ये पूरी टीम का। आंखों ही आंखों में एक दूसरे खिलाड़ी के इशारे से ही, हाँ मैं कहाँ थ्रो करूँगा, कहाँ क्या करूँगा, मेरे को बंट करना, ये कोच और सभी खिलाड़ी और कोच के बीच, दोनों के बीच में ही कॉम्बिनेशन होगा आंखों में, क्योंकि बात करने से दूसरे खिलाड़ी समझ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मुंह पर हाथ लगा के बात करते हैं, अगर ना समझ में आए, या तो फिर जैसे बंट करना किसी बैटर को, तो कोच कुछ साइन करता है, उसी से बैटर समझ जाता है हाँ मेरे को यहाँ हिट करनी है या बंट करना है या बॉल को छोड़ना है। ये सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आती हैं। अभी जो यहाँ हिट पे किया उस पर फील्डिंग मिस की है और रन बन चुका है उत्तराखंड का एक और सेकंड बेस पर बैटर सेफ है। अरे रूपम गया था ना। अभी देख शायद कैमरे ने फोकस नहीं किया, हिडन बॉल ट्रिक का अभी इस्तेमाल किया गया था अभी इस प्ले में। सेकंड बेस के जो फिल्टर हैं उन्होंने बॉल को छुपाया था। ग्रेट थ्रो बट सेफ ऑन थर्ड, टाइम कॉल किया। काफी अच्छा कनेक्शन, तो लेकिन नहीं पहुंचा। कम्बल किया फर्स्ट बेस ने, बेस को छोड़ा, सेफ ऑन सेकंड और रन भी काउंट किया, 4 रन। उत्तराखंड सेकंड बॉटम में ये लीड ले रही है उत्तराखंड। जी हाँ, गेम लेके भाग रही है उत्तराखंड अभी। तेलंगाना के कोच ने टाइम लिया और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कहाँ इस खेल को कहाँ नया मोड़ दें कि ये इनिंग खत्म हो, क्योंकि लास्ट अवे है, लास्ट अवे पर रन बन रहे हैं। उत्तराखंड की टीम काफी खुश है। देखिए इनके कोच को आपने अपनी टीम के लिए अच्छी हिट लगाई, स्कोर खड़ा किया है। अभी इस मैच के तुरंत बाद ही हरियाणा वर्सेस पंजाब का हार्डलाइन का मैच होगा। आप डीडीए लाइव के माध्यम से उस हार्डलाइन के मैच को भी देख सकते हैं। एक नया रूपरेखा तैयार कर रही है डीडीए, जो कि बेसबॉल में जितने भी मैच होते हैं इसको लाइव करके, जो जिनके घर परिवार में जैसे बच्चे खेलने आते थे पहले, घर पे जाके बताते थे कि आज हमने ऐसे किया, हमने ऐसे खेला, हमने ऐसे हिट की, लेकिन अब उनके घर परिवार जितने भी दोस्त हैं स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी हैं, सब घर बैठकर उन्हें लाइव देख सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे खिलाड़ी सभी कैसे बेसबॉल खेलते हैं, कैसे खेल रहे हैं। एक अच्छा रूपरेखा तैयार कर रहा है डीडीए बेसबॉल के लिए।
बोतल में लगता है अच्छी हिट लगाई, राइट फील्ड की तरफ ये हिट गई, सेफ ऑन फर्स्ट और स्कोर सेफ। 5 रन बन चुके हैं उत्तराखंड के, सेफ ऑन फर्स्ट। एक ही इनिंग में 5 रन बनाना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और लास्ट अवे है, ये भी सबसे बड़ी बात रहती है कि टीम सोचे कि कई बारी आउट नहीं हो रहे तो एक एक फील्डर को, एक एक बैटर को आउट करके हम इनिंग खत्म करें, लेकिन एक मिस फील्डिंग की वजह से जो ये एरर हो रहे हैं ये उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका स्कोर बन रहा है। स्ट्रेल की है फर्स्ट बेस से सेकंड बेस, सेफ ऑन सेकंड बेस। बंट किया, ओ मिस फील्ड, फिर से वही एरर। अच्छी खेल नीति उत्तराखंड के खिलाड़ी के द्वारा, अपने साथी को भी आगे की तरफ सेफ और खुद भी सेव किया उन्होंने खुद को। बंट एक ऐसी डायरेक्शन में यानी कि बॉल को पहुंचा देता है कि जहां आप चाहते हैं, बॉल को बिल्कुल रोक देते हैं कि इनफील्ड में एडवांस करने के लिए अपने साथी खिलाड़ी को एडवांस, खुद ही भले आउट हो जाएं लेकिन अपने साथी खिलाड़ी को एडवांस करने के लिए बंट लगाया जाता है। स्ट्राइक, स्विंग एंड मिस, स्ट्राइक। देखिए ये रनर को पता नहीं था कि थर्ड बेस भी लोड है और वो भाग निकले थे, नहीं ध्यान कि मैच का प्रेशर देखिए किस तरीके से। थर्ड बेस लोड और सेकंड बेस, थर्ड बेस की तरफ ही भाग पड़े, कोच ने याद दिलाया वापिस भागी। और अभी मुस्कुरा रहे हैं बेस पर बैठकर। लास्ट अवे था, काफी देर से मशक्कत कर रहे थे तेलंगाना के खिलाड़ी कि कब एक आउट हो और हम इनिंग चेंज करें। 5 रन उत्तराखंड के, अगर तेलंगाना को गेम में बने रहना है तो कम से कम इस मैच इन रनों को रिकवर करना पड़ेगा। जो गलतियां फील्डिंग में की हो बैटिंग में न दोहराएं।
काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, थोड़ी सी हल्की बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छी हवा और खेलने के लिए ही बिल्कुल जो एक प्रॉपर मौसम होता है वो मौसम हो चुका है अभी यहाँ पे, जो मैं यहाँ बैठ के फील कर रहा हूँ। खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा मौसम, काफ़ी अच्छी हवा। फ्री बेस लगता है कोच समझे, लेकिन देर से समझे कि हम बिना हिट मारे भी पहुंच सकते हैं। फ्री बेस जो कि बिना हिट मारे आगे पहुंच जाता है बैटर, लेकिन रन काफ़ी हो चुके हैं। आपको आपके बेस लोड करके हिट लगानी होगी, स्कोर तभी होगा एक। स्टिल सेकंड बेस सेफ। पिक्चर अपने निशाने से काफी दूर ये इनिंग्स में। स्ट्राइक। काफ़ी अच्छे फाउल हिट, अच्छे स्ट्रांस ले रखा बैटर ने, काफ़ी अच्छे हिट लगाने के लिए अच्छा स्ट्रांस है। ग्रेट हिट, दोनों ही फील्डरों के नीचे से निकली है वो, और ऑफिशियल्स का इशारा शायद टू बेस। सेकंड बेस लोड है तेलंगाना का। स्कोर सेफ, रन काउंट। बल्लेबाज ने अपना खुद का बलिदान दिया और अपने साथी खिलाड़ी का स्कोर काउंट करवाया है।
लगता है मैच में जान डाल रहा है तेलंगाना। वन अवे है और 2 रन बना लिए हैं तेलंगाना की टीम ने। दोनों ही टीमों का जोश देखने को यहाँ मिल रहा है। काफी अपनी टीम का प्रोत्साहन बढ़ा रहे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। स्ट्राइक। आज सभी हार्ड लाइन के और सेमीफाइनल मैच समाप्त होंगे। ये लड़कियों का पहला हार्ड लाइन का मैच है। इसके बाद हरियाणा वर्सेस पंजाब का हार्ड लाइन का मैच होगा। कल के जो मुकाबले रहेंगे, फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र वर्सेस मध्य प्रदेश का जो फाइनल मुकाबला है सीनियर नेशनल का, वो कल आप डीडीए के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। फाउल हिट, स्ट्राइक 1। लास्ट अवे तेलंगाना की टीम का। अच्छे ग्राउंड हिट, लेकिन पकड़ी और कैरी नहीं कर पाए। बॉल पहुंच चुकी थी लेकिन फर्स्ट बेस के खिलाड़ी कैरी नहीं कर पाए बॉल को। उनके ग्लव्स में नहीं आई बॉल और सेफ ऑन फर्स्ट। जी हाँ, थ्रो थोड़ा सा चूकता हुआ वो समय पे। उत्तराखंड की टीम ने भी लास्ट अवे पर रन बनाए थे। क्या तेलंगाना भी उसी को फॉलो करेगी? क्योंकि लास्ट अवे है तेलंगाना की टीम का और 2 रन जोड़ लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। थर्ड टॉप है ये। सेफ ऑन सेकंड। फाउल हिट। लगता है बल्लेबाज ने बैटर ने ध्यान नहीं दिया कि मेरा जो साथी रनर है वो दौड़ रहा है और उन्होंने स्विंग किया, फाउल हिट हुई। बॉल सेफ ऑन थर्ड। फिर से वही लगता है मेरे को, क्या उत्तराखंड की तरह ही दोहराया जाएगा ये कि लास्ट अवे पर रन बन रहे हैं। फाउल हिट।
घंटे में हिसाब नहीं ये अपने घंटे में तो दो दो करके वही राउंड मारता है सुबह शाम हाल नहीं जा सकते रिप्लेसमेंट ही नहीं है फॉवलेट क्या लेते हैं सर जिन जो मेरे साथी देख रहे हैं कि अभी बार बार फाउलेट लगा रहे हैं, और स्ट्राइक 2 होने के बाद भी फाउलेट लगा रहे हैं, मैं उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस 2 फाउलेट के बाद और इसी बीच तेलंगाना की इनिंग समाप्त हुई। स्कोर उत्तराखंड के 5 और तेलंगाना के 2 रन। इनिंग चेंज हो गई, थर्ड बॉटम, जो कि उत्तराखंड की बैटिंग है अभी। मैं वो रूल क्लियर करना चाहूँगा जो बीच में रह गया था कि पहली 2 स्ट्राइक पर अगर आपकी फाउलिट जाती हैं तो वो स्ट्राइक में काउंट होंगी। अगर उसके बाद आप कितनी भी फाउलिट लगाओ तो वो आपकी किसी भी पिच में काउंट नहीं होंगी, ना तो बॉल काउंट होंगी ना स्ट्राइक काउंट होगी। पहली 2 पिचों पर अगर आप फाउलिट लगा रहे हैं तो वो आपकी स्ट्राइक काउंट होंगी। कई बारी पूछ लेते हैं कि 2 स्ट्राइक हो गई, पहली तो 2 स्ट्राइक हो गई, अब क्यों नहीं मान रहे कि अभी भी फाउलिट लग रही हैं। लेकिन ये बेसबॉल का रूल है। बेसबॉल में इतने रूल हैं तभी इसको इतना पसंद किया जाता है इस खेल को, क्योंकि नियम से जो चलता है वही आगे बढ़ता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बॉल गुड हिट, सेंटर फील्ड के पास ये बॉल, लेकिन सेफ ऑन फर्स्ट बेस। हाँ बोलो लगता है कुछ फिर से ऑब्जेक्शन हुआ है। प्लेट एम्पायर और जो स्कोरर है वो उनसे क्लियर करते हुए वो चीजें, लेकिन नहीं कुछ ऐसा हुआ। जो भी कुछ था सुचारू रूप से चालू है। जो ऑब्जेक्शन तेलंगाना की टीम ने उत्तराखंड के ऊपर लगाए थे ऐसा कुछ मिला नहीं। आप प्लेट एम्पायर ने कहा मैच स्टार्ट कीजिए। पिक्चर चेंज किया है तेलंगाना की टीम ने।
Strike. Oh, safe on second. Strike. Foul it. तेलंगाना अपनी जान झोंकेगी इस मैच में क्योंकि हार्ड लाइन का मुकाबला है। स्ट्राइक। स्ट्राइक आउट। बॉल को देखते रहे लेकिन हिट नहीं करी। स्ट्राइक आउट। समझ नहीं पा रहे थे कि आउट है या मेरी और स्ट्राइक है। शायद इसी असमंजस के बीच में रहे खिलाड़ी। और दूसरा हार्ड लाइन मुकाबला भी इस मैच के तुरंत बाद होगा। दोनों ही टीमें वार्म अप हो रही हैं। पहुंच चुकी हैं दोनों ही टीमें और इसी बीच काफी अच्छी हिट लगाई है उत्तराखंड के खिलाड़ी ने और सेंटर फील्ड की तरफ ये गेंद। दूसरे बेस तक भाग सकते थे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर से वही एरर। ये एरर उत्तराखंड को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हुए प्लस पॉइंट रहे हैं उत्तराखंड के लिए कि तेलंगाना की टीम कहीं ना कहीं ये एरर करे और हम बढ़त बनाए रहे इस मैच में। 6-2 का स्कोर हो गया और फाउल इट। सेकंड सेफ ऑन सेकंड। अच्छी हिट लगाई ग्राउंड बॉल और फिर से वही एरर। फिर से उत्तराखंड का फायदा। रन काउंट हुआ है और अपना रन काउंट किया है। सेफ ऑन सेकंड। उत्तराखंड की टीम ने 7 रन बना लिए और तेलंगाना टीम के 2 रन हैं। बॉटम है थर्ड इनिंग की ये। काफी दूर से दौड़ के आई है देखिए इस खिलाड़ी को।
मौसम भी काफी अच्छा हो चुका अभी यहाँ का। काफी अच्छी हिट लगाई सेंटर फील्ड की तरफ और उससे भी अच्छी कैच पकड़ी है। बेहतरीन शानदार कैच आप रिप्ले में देखेंगे। बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी है सेंटर फील्ड के खिलाड़ी ने। देखिए ये एक फिर से वही चतुराई पिचर के द्वारा कि सेकंड बेस ने ज्यादा एडवांटेज ले रखी है रनिंग के लिए कि थर्ड बेस पर पहुंचने के लिए, लेकिन रोकने वाले को कौन रोक सकता है। काफी अच्छी आउट। नहीं समझ पाए कि करना क्या है, आगे निकल गए थर्ड बेस से। और ये फोर्स आउट नहीं, ये अटैक आउट होता है। काफी अच्छा थ्रो था कैचर के द्वारा। थर्ड बेस को भी सूझ नहीं थी कि बेस छोड़ दे पहले बॉल कैरी करें। ये देखिए अटैक किया और थर्ड बेस के एम्पायर ने उन्हें आउट करार दिया। इनिंग चेंज। काफी अच्छा खासा रन था ये। देखिए उत्तराखंड की टीम ने कहीं ना कहीं फिर से गलती की, लेकिन उनका स्कोर काफी ऊपर हो चुका है 7 और तेलंगाना 2। अब की बार तेलंगाना को कुछ बड़ा करना होगा ताकि उत्तराखंड के साथ वो मैच में बने रहें। अगर इसी प्रकार रन न बनाए तो कहीं ना कहीं ये मैच वो हार सकते हैं। अरे नहीं 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 दूसरे हार्डलाइन मैच के लिए दोनों ही टीमें अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं कि इस मैच को किस प्रकार से खेलेंगे और किस प्रकार से इस मैच को निकालेंगे हम, क्योंकि थर्ड पोजीशन के लिए मैच है, सीनियर नेशनल का मैच है थर्ड पोजीशन के लिए। कि दोनों ही टीमें सोचेंगी कुछ ना कुछ हम घर लेके जाएं, कोई पोजीशन लेके अपने स्टेट में जाएं। क्योंकि काफी मैच खेलने के बाद ही दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी और उन्हें वहां निराशा हाथ लगी। तो कि हम अपनी मेहनत का फल क्यों जाया करें, कहीं कोई एक पोजीशन तो घर लेके जाएं। लेकिन गेम में हार जीत चलती रहती है, कोई खिलाड़ी निराश ना हो इन हार से, इनसे सबक लें कि अगली बार इससे अच्छा और बेहतर करके आएंगे, अपनी टीम के लिए खेलेंगे। फाउल इट। फोर टॉप स्कोर 7 उत्तराखंड और 2 तेलंगाना। एक एक करके ही आउट लेते रहे, इससे 1 अवे।
बॉल 2। फ्री बेस। इस मौके पर जैसे आप देख रहे हैं कि इस मौके पर जो फ्री बेस मिलता है ये कहीं ना कहीं एक दूसरी टीम को बोनस देने के बराबर है। कहीं कोई ऐसी हिट लगे जिसे फील्डर मिस कर दे और ये रन भी बन सकता है, और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने इसको फ्री बेस दिया था और ये रन बन चुका है। ये कहीं ना कहीं खामियाजा है ऐसे मौके पर फ्री बेस मिलना। स्ट्राइक, सेफ ऑन सेकंड। टाइम लिया है क्योंकि बेस लोड हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं। तेलंगाना के कोच भी अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए इंस्ट्रक्शन उत्तराखंड में यही होगा कि धैर्य से काम ले, अपनी चुनौतियां उठाएं, जहां पे आउट करने का मौका मिले आउट कर ले। अच्छा लीड है 5 रन का। जी हाँ, बिल्कुल यही मानना है कि अगर आप उस सेकंड बेस वाले खिलाड़ी को आउट नहीं ले पा रहे हैं तो फर्स्ट पर थ्रो करें कि एक खिलाड़ी को जरूर आउट लें। कम से कम अगर वो सिर्फ एक ही रन बन रहा है तो आप कम से कम एक आउट तो लें, क्योंकि एक आउट हो चुका है और एक आउट हो और लेना होगा आपको। कोई बात नहीं है क्योंकि हम लीड में हैं। देखिए देखिए अगर सेफ ऑन थर्ड बेस। तेलंगाना के खिलाड़ी कहीं ना कहीं रिस्क उठा रहे हैं क्योंकि लीड बन चुकी है उनकी। कहीं ना कहीं रिस्क नहीं उठाएंगे तो रन नहीं बनेंगे। स्लाइड लगाई है तभी पहुंचे हैं बेस तक। क्योंकि अब तो मैच में करो मरो की स्थिति है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो काफी पीछे हो जाएंगे तेलंगाना के खिलाड़ी। फ्री बेस मिला फिर से। मैच का प्रेशर इतना हो चुका है कि दो फ्री बेस इसी इनिंग में, फोर्थ इनिंग में दो फ्री बेस दिए हैं लगातार। बहुत ही अच्छी चुनौती है ये तेलंगाना के लिए। और देखिए आप, फर्स्ट बेस ने स्टील करके सेकंड बेस पर पहुंचे हैं। सेफ सेकंड और थर्ड बेस लोड हैं। एक अच्छी हिट दोनों ही रन काउंट करवा सकती है तेलंगाना के लिए। स्ट्राइक।
Strike two. Strike out. Swing and miss. Strike out किया और दो खिलाड़ी आउट हो चुके तेलंगाना टीम के। लास्ट अवे और थर्ड और सेकंड बेस लोड हैं। काफी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था तेलंगाना, लेकिन जिस तरीके के फ्री बेस मिले थे, लेकिन ये स्ट्राइक आउट भी उन्हें उतना ही चुभेगा। काफी अच्छी हिट लगाई है, लेकिन सीधा सेंटर फील्ड के हाथ में, गोदी में ये गेंद गई और उन्होंने मौका नहीं चुका और दोनों ही खिलाड़ी अपने बेस पर ही रह गए। साइड आउट। उत्तराखंड 7, तेलंगाना 2। काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गया था तेलंगाना। 2 बेस लोड हो चुके थे। कहीं ना कहीं जी एक हाँ। सेफ हिट। अगर वो 2 रन ले लेते तो मैच बड़ी रोमांचक स्थिति में आ जाता, पर ये वापस सीधा उत्तराखंड के हाथों में खेल लिया है। फोर्थ बॉटम, स्कोर 7-2। और फिर से उत्तराखंड अपनी टीम के लिए रन बनाने के लिए उतरे हैं कि हम स्कोर को इतना बड़ा कर दे कि अगर 1-2 रन हम खाते भी हैं या तो हमें कोई परेशानी ना हो। काफी अच्छी हिट लगाई, पैरेलल हिट लगाई है और सेंटर फील्ड के हाथ में 1 बाउंस और सेफ ऑन फर्स्ट। सेफ ऑन सेकंड। अभी जैसे आप लाइव देख रहे हैं, सभी साथी लाइव जुड़े हैं। आने वाले समय में आप एक एक खिलाड़ी का बायोडाटा, उसकी स्टैट्स, यानी कि उसने कितने हिट लगाए हैं अपने एक सीजन में, कितने आउट लिए हैं, कितने आरबीआई लगाए हैं, ये सभी आने वाले समय में आप सभी यूट्यूब के माध्यम से, इसी चैनल्स के माध्यम से आप उस खिलाड़ी का बायोडाटा देख सकते हैं। जैसे ही वो फील्डिंग पे आएगा या बैटिंग पे आएगा या पिचिंग पे आएगा, सभी उसके करियर का रिजल्ट आप देखने को मिलेगा। उस खिलाड़ी के बारे में आप, उसकी क्षमता के बारे में आप जान पाएंगे कि एक खिलाड़ी किस दर्जे का खिलाड़ी है। स्विंग एंड मिस, स्ट्राइक।
अच्छी हिट लगाई, शॉर्टस्टॉप ने कैरी किया और वन अवे। और अपने साथी का रन बनवाया है। 8 रन हो चुके हैं उत्तराखंड के। फिर से एक मल्टीपुल हिट और सीधा फर्स्ट बेस के हाथ में। लास्ट ओवर आ चुका है उत्तराखंड की टीम का। तेलंगाना की टीम कहीं ना कहीं सोचती होगी कि ऐसा हम शायद पहले कर लेते, कोई एरर ना करते तो इतने रन नहीं बनते। 8 रन उत्तराखंड के लीड हो चुकी है काफ़ी। और तेलंगाना की टीम की एक ही बैटिंग है, क्योंकि उनकी फिफ्थ टॉप है। टॉप के बाद अगर कहीं स्कोर बराबर भी कर लेती हैं कहीं ना कहीं, तो भी उत्तराखंड की एक बैटिंग और आएगी। तेलंगाना के पास सिर्फ एक ही मौका है इस इनिंग के बाद। जी हाँ, और अगर उत्तराखंड ने यहाँ पे और 4 रन बना लिए तो उनको वो मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये 10 के डिफरेंस से ये मैच हार जाएंगे। बॉल 2। बेस लास्ट वे है उत्तराखंड की टीम का। राइट, सेकंड। राइट, काफी जजमेंट किया है प्लेट एम्पायर ने, और उसके बाद ही स्ट्राइक काउंट किया है। स्ट्राइक 2। काफी स्लो पिच और बल्लेबाज ने हिट की सीधा खिलाड़ी के हाथ में, और इनिंग चेंज। अगर तेलंगाना इस इनिंग में 6 रन बनाकर 8 रन की बराबरी करता है, तो ही ये मैच कहीं ना कहीं मुकाबले में होगा। अगर तेलंगाना की टीम 8 रन क्रॉस नहीं कर पाई तो ये मैच हार जाएगी। और इस मैच के तुरंत बाद ही पंजाब वर्सेस हरियाणा का हार्डलाइन का दूसरा मुकाबला होगा, जो आप सीधा डीडीए बेसबॉल ऑफिशियल्स की साइट पर यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों ही टीमें वार्म अप हो चुकी हैं और ये फिफ्थ टॉप है। तेलंगाना को जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो रणनीति अपनानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक महज औपचारिकता जहाँ कहीं देख रहा हूँ मैं कि वो जोश भी दिखाई नहीं दे रहा तेलंगाना की खिलाड़ियों में।
काफ़ी अच्छा मुकाबला रहने वाला है, जो कि हार्ड लाइन का मुकाबला है। ये पंजाब और हरियाणा का मुकाबला होगा। दोनों ही राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी इनका मुकाबला आमने सामने का होगा। कौन ट्रॉफी को घर लेके जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में ही आप इसको लाइव देखेंगे। इस मुकाबले को काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहेगा दोनों ही टीमों का। मंजे हुए खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों में, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। कोई अपनी बैटिंग से मशहूर है तो कोई अपनी पिचिंग से, कोई अपने इसी स्किल से, कोई अपनी किसी स्किल से मशहूर है, दोनों ही टीमों में खिलाड़ी। स्ट्राइक, स्ट्राइक टू। जितने जल्दी खिलाड़ी आउट करेंगे उतना ही उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना मैच को लंबा खींचेंगे कहीं ना कहीं आपकी टीम का मोरल भी डाउन होगा, कहीं एरर होंगे, वो तेलंगाना के लिए अभी भी प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रन बनते समय वक्त नहीं लगता। लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में है अभी उत्तराखंड। काफ़ी अच्छा मौका उत्तराखंड के लिए कि सीनियर नेशनल में थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे। अभी अगर ये मैच जीतते हैं तो काफ़ी अच्छी हिट पिचर के ऊपर से लगाई है। सेफ हिट मानी जाती है कि पिचर के ऊपर से बिल्कुल ही सेफ हिट लगाई, सेफ ऑन फर्स्ट बेस, क्योंकि पिचर के पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं होता। अगर लैंड ड्राइव हिट जाती है तो आप बिल्कुल सेफ माने जाते हैं। शील कर गए हैं खिलाड़ी, सेफ ऑन सेकंड। कोशिश पूरी जारी है तेलंगाना टीम की। सेफ ऑन थर्ड बेस। फ्री बेस। देखिए फिर से वही अपने और खामियाजा भुगता। गलत थ्रो की वजह से रन काउंट हो चुका है एक तेलंगाना की टीम का, लेकिन अपने खिलाड़ी को खोआ है उन्होंने कि रन बन जाए, लेकिन फर्स्ट बेस खिलाड़ी जो एडवांस लेकर सेकंड पर जाना चाहते थे उन्हें बीच में ही अटैक करके आउट किया है उत्तराखंड की टीम ने। 1 अवे, लेकिन स्कोर का इजाफा हुआ, 3 रन बनाए हैं तेलंगाना की टीम के 3 और उत्तराखंड की टीम के 8 रन बन चुके हैं।
काफी अच्छी हिट, काफी अच्छी हिट लगाई है। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां पर। होम की तरफ बॉल, लेकिन बॉल इन प्ले में ही रुक गई। काफी खिलाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ेगी और बैटर दौड़ रहे हैं। थर्ड बेस पर पहुंचे, काफी अच्छी हिट लगाई। देखिए कहीं ना कहीं मुकाबला अपना जोर पकड़ता हुआ और तेलंगाना की टीम कहीं ना कहीं अपना स्कोर बढ़ा रही है। 3 रन हो चुके और थर्ड बेस लोड, 1 अवे। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती और देखते ही देखते देखिए आप, 1 रन भी खड़ा हो चुका और थर्ड बेस भी लोड है। कहीं एक अच्छी हिट और तेलंगाना का स्कोर और आगे बढ़ जाएगा। थर्ड बेस लोड, पिक्चर रेडी, बैटर रेडी, स्ट्राइक कॉल बाय प्लेट एम्पायर। क्योंकि इस मैच के बाद ही तुरंत बैट, काफी अच्छी हिट लगाई। थर्ड बेस के पैरों के नीचे से गेंद निकली और पीछे ही लेफ्ट फील्ड के खिलाड़ी से रन काउंट, 4 रन बन चुके हैं। टू बेस, सेफ ऑन सेकंड। तेलंगाना की टीम मैच में वापसी करती हुई, 4 रन। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के कोच ने टाइम आउट का इशारा किया और अपनी टीम को समझाते हुए काफी अच्छी हिट लगाई थी तेलंगाना के खिलाड़ी ने। गेम थोड़ा रोमांचक होता हुआ, यही जी तो हाँ, खासियत है बिल्कुल की। जी हाँ, तभी तो उत्तराखंड के कोच ने टाइम आउट लिया, अपनी टीम के खिलाड़ियों को समझाया कि आप जल्दबाजी ना करें, पहले एक बॉल पकड़े और एक खिलाड़ी को आउट करें, क्योंकि मिस फील्ड प्लस पॉइंट है दूसरी टीम के लिए। स्ट्राइक, ये जैसे आप देखा आपने अभी, कैचर ने वाइल्ड थ्रो यानी कि बेमतलब ही थ्रो कर दिया, क्योंकि ज़्यादा लीड नहीं ली थी सेकंड बेस ने। अगर ये कहीं ना कहीं थर्ड बेस छोड़ देता तो ये एडवांटेज हो जाती तेलंगाना के लिए। उन्हें ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। हवा में गेंद और सीधा खिलाड़ी के हाथ में। काफी अग्रेशन देखने को मिला खिलाड़ी के द्वारा। वो जानते हैं कि मत अगर रन बन रहे हैं तो इस बल्लेबाज को आउट करना जरूरी था और उन्होंने वो मौका चुका नहीं। 2 अवे, लास्ट अवे फॉर तेलंगाना। और
उत्तराखंड की टीम में जोश पूरा, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एक एक पिच जैसे आउट किया था, अभी एक एक बल्लेबाज को आउट करना अपनी ट्रॉफी के पास ले जा रहा है। हवा में गेंद, लेकिन फाउलिट का इशारा। बॉल 1 स्ट्राइक 1। बॉल 2 स्ट्राइक 1। लास्ट अवे, और आप देखेंगे फाउलेट। कई बारी ये किस्मत से ये बॉल लाइन के अंदर हो जाती तो रन बनते दिखा देर नहीं लगती, क्योंकि थर्ड बेस लोड है तेलंगाना का। बॉल फुल काउंट बोथ साइड। क्योंकि इस मैच में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लास्ट अवे है, और जीतना तो अभी काफ़ी दूर है। और पंजाब के खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ी, दोनों ही टीमें ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच हार्ड लाइन का ही मुकाबला खेला जाएगा। अभी दूसरा हार्ड लाइन का मुकाबला है ये मेन सेक्शन में। काफ़ी अच्छी हिट लगाई, और थर्ड बेस के हाथ में गेंद, और अवे किया है, और उत्तराखंड ने मैच जीत लिया है 8 रन से, यानी कि 8 और 4 का स्कोर रहा है तेलंगाना का। थर्ड पोजीशन हासिल किया। आप देख रहे हैं खिलाड़ियों का जोश। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। वो इस जीत की खुशी को बयान नहीं कर रहे, उनका कोच उनके बीच पहुंचे हैं, और काफ़ी अच्छा मैच रहा है ये उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए कि थर्ड पोजीशन हासिल की है उन्होंने सीनियर नेशनल में। काफ़ी मशक्क़त से पहुंचते हैं यहाँ तक, काफ़ी जोर और जज्बा दिखाना पड़ता है दोनों ही टीमों को, लेकिन दोनों ही टीम में अच्छा खेले, लेकिन दोनों टीमों में से एक ही टीम विजेता रहती है। हार और जीत तो दोनों ही एक पहलू का अंतर है, लेकिन उत्तराखंड ने ये बाजी मारी और इस मैच के विजयी रहे। थर्ड पोजीशन हासिल की उन्होंने सीनियर नेशनल में। फाइनल मैच कल होगा दोनों ही टीमों का, मेन सेक्शन और वुमेन सेक्शन में। अभी आप देख रहे हैं पीछे कि हरियाणा टीम और पंजाब टीम दोनों ही टीम हार्ड लाइन का मैच खेलने के लिए आई है मेन सेक्शन में। पंजाब एमपी से हार कर आई है और हरियाणा महाराष्ट्र से हार कर आई है। दोनों ही टीमें के बीच ये मुकाबला होगा। तेलंगाना के खेल का अच्छा प्रदर्शन, और सभी खिलाड़ी अपने मैच के रेफरियों के मिलते हुए उनका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उनके रथ का पहिया रुक गया है और अब कल फाइनल मुकाबला ही रहेगा, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। अभी जुड़ते हैं हम आपके साथ थोड़ी देर में।
अच्छी हिट, ग्राउंड हिट, अच्छा कलेक्शन, काफी अच्छी रनिंग और सेफ, सेफ ऑन फर्स्ट बेस। अच्छी कलेक्शन की थी, अच्छा थ्रो था, लेकिन पहुंच चुके थे, काफी लेट हो गए थे शॉर्ट स्टॉप के खिलाड़ी। काफी अच्छी कलेक्शन की फर्स्ट बेस के फील्डर ने, जर्सी नंबर 11 में पंजाब के बल्लेबाज। लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं पंजाब के बैटर। स्ट्राइक, फाउलेट, जो पहली दो फाउलेट लगेंगी वो स्ट्राइक काउंट होगी। काफी अच्छी हिट लगाते हैं पंजाब के ये बैटर। हिट लगाई, बॉल हवा में और नीचे फील्डर कैच किया सेकंड बेस के खिलाड़ी ने। 2 अवे। काफी फास्ट मैच चल रहा है ये। पंजाब ने अपने 2 बैटर खो दिए हैं और फर्स्ट बेस लोड हैं। दूर मारना चाहते थे लेकिन बॉल हवा में। स्ट्राइक, बड़ा ही शौक लगा था हमें जब हमने देखा कि पंजाब की टीम सेमीफाइनल दूसरा वाला हार गई, वो भी 8-1 से। स्ट्राइक 2। प्लेट के अंदर बाहर जो एक अच्छा पिचर है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं जो प्लेट के कॉर्नर यूज करता है, जो अच्छा पिचर है, स्विंग वेरिएशन के वजह से टाइम कॉल किया तो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट बेस के बीच। ग्राउंड शॉट मारने में माहिर हैं ये, काफी लंबी हिट भी लगाते हैं। एक मैच में इन्होंने होम भी लगाया था अभी। अच्छे हिट लेकिन ग्राउंड हिट, अच्छी कलेक्शन, ग्रेट थ्रो, आउट। इनिंग चेंज, काफी जल्दी ही इनिंग खत्म हो गई है क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी इनफील्ड के अंदर ही आउट हो गए हैं। हरियाणा टीम का अच्छा गेम प्ले। अभी बल्लेबाजी में कितना दमखम दिखाते हैं हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि फील्डिंग में उन्होंने अपना दमखम दिखाया और पंजाब को जल्दी ही आउट किया। हरियाणा टीम के खिलाड़ी जोश में पूरा, क्योंकि हार्डलाइन का मुकाबला है। जो टीम जीतेगी थर्ड पोजीशन हासिल करेगी। दोनों ही टीमें चाहती हैं कि हम ये खिताब अपने स्टेट में लेके जाएं।
राइट हैंड के पिचर पंजाब के अपनी टीम को पहले मैचों में जीत दिलाते आए हैं। अभी उन्होंने अपना मैच एमपी से हारा है और वो हार्ड लाइन का मुकाबला खेल रहे हैं। ये आज का आखिरी हार्ड लाइन का मुकाबला है। कल दोनों ही टीमों का मैन और वुमेन्स में दोनों ही टीमों का फाइनल मैच आप लाइव देखेंगे। उस मैच को भी डीडीए ऑफिशियल्स की साइट पर यूट्यूब के माध्यम से। हरियाणा के बल्लेबाज आए हैं। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं सैबी, हरियाणा की टीम के पहले नंबर के बल्लेबाज। छोटी कदकाठी के खिलाड़ी हैं लेकिन स्ट्राइक स्ट्राइक वन बॉल वन। ग्राउंड शॉट लगाते हैं लेकिन मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। बिना देखे स्विंग, बाहर की पिच पर घुमाया, स्विंग एंड मिस। स्ट्राइक टू बॉल वन। काफी अच्छा मुकाबला चलेगा ये दोनों ही टीमों के बीच में। ये मुकाबला रहे। वेरिएशन का यूज कर रहे हैं पंजाब के पिचर, जो कि बॉल को हवा में ही प्लेट से बाहर निकाल रहे हैं। आप अगर बैटर हैं तो आपको लगेगा कि बॉल मेरे सामने मेरी रडार में आ रही है, लेकिन हवा में ही गेंद अपना रुख बदल देती है। हिट लगाई, बॉल हवा में और कैचर ने ही बॉल को पकड़ा। हरियाणा का बैटर आउट। पहले नंबर के बल्लेबाज थे जो सैबी। तेरह नंबर जर्सी में राजू रंजन लंबी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी भी। मैच का प्रेशर इतना है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब के भी अच्छे हिटर थे जो पहले तीन बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने ही अपना गवा दिया। पहली पिच पर हिट लगाई और सीधा सेकंड बेस के हाथ में और फर्स्ट बेस पर थ्रो टू अवे। उसी रूप में जा रहे हैं जैसे पंजाब के ये गलती की थी, उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी भी। टू अवे। दोनों ही टीमों ने अपने सेमीफाइनल में एक एक रन ही बनाया था और अभी भी दोनों टीम स्ट्रगल कर रही है अपना पहला रन बनाने के लिए। अंशुल आए हैं नंबर 3 के बैटर, जर्सी नंबर 6 में। पिचर हैं जो कि हरियाणा टीम के पिचिंग में अपनी महारत दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं वो बैटिंग में अपनी टीम के लिए क्या कुछ करते हैं। बॉल टू। काफी अच्छी हिट लगाई लेकिन सीधा पिचर के हाथ में। उन्होंने दौड़कर ही फर्स्ट बेस को टच किया और इनिंग खत्म हुई। ये है दोनों ही टीमों का मुकाबला। खुद ही दौड़कर इसे आउट किया। देखिए आप, बैटर बॉक्स से निकले भी नहीं थे खिलाड़ी, समझ गए थे कि हाँ नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन्होंने डगआउट की तरफ ही जाना उचित समझा।
दोनों ही टीमों का स्कोर 0-0। कड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमें एक दूसरे को तराश रही हैं, कहाँ कौन गलती करे और हम बढ़त हासिल करें। अंशुल फिर से पिचिंग पर। अजय आए हैं जर्सी नंबर 12 में, जो कि पंजाब की टीम में सेकंड बेस पर तैनात। काफी अच्छी हिट लगा रहे हैं पिछले मैचों में, लेकिन उन मैच में और इस मैच में करोमरो की स्थिति है। जो अच्छी हिट लगाएगा वही कुछ कर पाएगा अपनी टीम में। स्ट्राइक नहीं दिया अंपायर ने ये बार, काफी लग रहा था, क्योंकि जोन में था। कई बार एंगल ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि स्ट्राइक है, लेकिन जो प्लेट के ऊपर एम्पायर है उसका एंगल और हमारे एंगल में काफी फर्क है देखने के नजरिए में। क्योंकि जो एंगल प्लेट, जो एम्पायर है, प्लेट एम्पायर, वो ऊपर से भी विजुअल है, देख रहा है वो उसके। कई बार एंगल चेंज हो जाता है बॉल की वेरिएशन की वजह से, कि बॉल बाहर से अंदर आई है, या इस वजह से आप कह सकते हैं कि हम मेरे को स्ट्राइक लगा, तो इसलिए ये चीजें मायने रखती हैं कई बार। जो स्ट्राइक जोन है एम्पायर का, उसी के हिसाब से कई बार बॉल लो हो जाती है और लगता है कि स्ट्राइक है। देख, इस तरीके से जैसे हमें अपने एंगल से लगा कि ये बिल्कुल सीधी पिच थी, लेकिन ये बॉल लो थी, इसी हिसाब से। जी बिल्कुल। फ्री बेस मिला है अजय को। प्रीत आए हैं जो कि 100 स्ट्रोक के खिलाड़ी हैं, काफी अच्छा आर्म है इनका। स्ट्राइक 1। ओ, बंट किया है। ओ, मिसफील्ड। ये देखिए, दोनों ही खिलाड़ी सेफ, बिल्कुल ही हाथ में था ये गेंद, नहीं समझ पाए पिचर। कोई नहीं जानता था कि ये बंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन खिलाड़ी और कोच के बीच में और फर्स्ट बेस जो रनर था उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ था कि हाँ, मैं कोई भी पिच आएगी तो बंट करूंगा, आपको दौड़ना है। क्योंकि फोर्स था, डबल प्ले की भी स्थिति थी, डबल प्ले का अच्छा मौका था हरियाणा की टीम के पास। काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा पंजाब। 2 बेस लोड। चार नंबर जर्सी में सौरभ आए हैं। लेफ्टी बल्लेबाज हैं। फिर से बंट लगाने का प्रयास। कमजोरी समझ रहे हैं वो दूसरी टीम के खिलाड़ियों की, क्योंकि क्विक रिएक्शन होता है बंट। आप
पहले ही पिच फेंकने से पहले ही या कोई खिलाड़ी फील्डिंग पे है तो पहले ही अगर मेरे पास गेंद आएगी तो मुझे उस बॉल पर क्या रिएक्ट करना है, कहाँ सबसे पहले थ्रो करना है, क्योंकि अब फोर्स है, नन अवे है, इन फ्लाई का रूल है। ठीक है। एक खिलाड़ी को पहले ही प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर मेरे पास गेंद आई तो मैंने कहाँ थ्रो करना है, क्या रिएक्शन करना है उस गेंद के ऊपर। इसी असमंजस में फाउल जो पिछली बॉल पे एरर हुआ था पिचर के द्वारा, वो सीधा ही फर्स्ट बेस की तरफ, पहले बॉल नहीं पकड़ी हो तो थ्रो करने की पोजीशन में आ गए थे। ये खामियाजा भुगतना पड़ा हरियाणा की टीम को। स्विंग एंड मिस, स्ट्राइक आउट किया है पंजाब के इस बैटर को। काफी अच्छी पिचिंग, वेरिएशन डाली थी, स्लो बॉल थी। 13 नंबर जर्सी में पंजाब के बैटर आए हैं, वन अवे है। बॉल वन, लंबे हिट लगाते हैं ये खिलाड़ी। स्ट्राइक, बॉल वन, स्ट्राइक वन। देखिए जिस चीज के लिए जाने जाते थे वही किया इस खिलाड़ी ने, दोनों ही बेस लोड थे। पंजाब के इस खिलाड़ी ने होम लगाकर दिखा दिया है कि पंजाब किसी से कम नहीं है और अपना जौहर मनवाया है हरियाणा के खिलाड़ियों से। दोनों ही बेस लोड थे। व्हाट ए ग्रेट हिट बाय पंजाब। एक साथ 3 रन काउंट, मौके पर चौका लगाया है। स्विंग देखिए आप, लेफ्ट फील्ड के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद, एक साथ 3 रन, एकदम मजबूत अपनी जगह पर पंजाब। हरियाणा के ऊपर पूरा प्रेशर, क्योंकि 3 रन एक ही साथ आए हैं। अरे यार अच्छी कुछ कर, एक तो ऑलरेडी मेरे पास शॉट है। बाहर अनिल जल्दी है, इधर से भी कर रहा है तो उधर से भी कर रहा है, दोनों एक साथ कर रहे नहीं होगा। काफी आहत पहुंचती है कई बारी ऐसे मैच सिचुएशन में। पहली पिच पर हिट लगाई, अच्छा कलेक्शन किया और अच्छा थ्रो किया। बैटर आउट। अच्छी फील्डिंग की पेशकश की थर्ड बेस ने। टू अवे, सेकंड टॉप। लगता है मार कर ही जीतना चाहते हैं मैच। काफी अच्छी हिट लगाई,
और सीधा सेंटर फील्ड के हाथ में गेंद। इनिंग खत्म हुई। होम लगाना चाहते थे ये खिलाड़ी। लास्ट अवे था पंजाब की बढ़त 3 रन की। सेकंड बॉटम हरियाणा को मैच में बना रहने के लिए स्कोर बनाना पड़ेगा। अनिल तो कुछ कर रहे थे, बहुत सारे नहीं, तू कुछ मत कर, मैं बस कर रहे हैं। 1 और एक इनपुट लो क्या? स्ट्राइक। 1 स्ट्राइक 1। तो सगळं बंद होईल म्हणून तर मी नाही केलं। समझना चाहिए हरियाणा के खिलाड़ी को कि किस तरीके से पिच फेंक रहे हैं पंजाब के पिचर। बॉल टू स्ट्राइक 1। ये अनिल तो कुछ मत कर, अनिल तो कुछ मत कर। ये भी चीटिंग है। हाँ यार वो बोला। वरुण तो अकेला ही है। आते ही लगाया, काफी अच्छे हिट, थर्ड बेस और शॉर्ट स्टॉप के बीच से हिट लगाई है। सेफ ऑन फर्स्ट बेस। वरुण का वरुण तेरे अकेले का ही चल रहा है, कुछ करना होगा हमसे। आप सभी साथी हमें लाइव देख रहे हैं डीडीए बेसबॉल के माध्यम से, जो कि इसका ब्रॉडकास्टिंग एम्बेसडर है। बेसबॉल का भी कोई भी मैच होगा कहीं भी आप उसे लाइव देख सकते हैं डीडीए बेसबॉल पर। हिट लगाई पहले ही पिच पर, कोई जजमेंट नहीं, लेकिन बॉल हवा में नीचे खिलाड़ी और सीधा हाथ में गेंद। काफी जल्दबाजी कर रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी, तूने लिया क्या? नहीं बिना किसी जजमेंट ना कोई काउंट के खेल रहे हैं। आ रहे हैं, हिट लगा रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए और भी गेंदें हैं। आप की रडार की गेंद है, आप उसी पे हिट लगाएं। टू अवे फॉर हरियाणा। इसके 3 नंबर पे जब अनिल था। वही फिर से हिट, लेकिन काफी अच्छी कलेक्शन और थ्रो आउट, साइड आउट। आप देखिए कि 2 पिचों में ही 2 बल्लेबाज आउट हो गए। अपने अपने ऊपर संयम नहीं बना पा रहे, अपना कंट्रोल खो रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी।
आ रहे हैं और हिट लगाकर पवेलियन यानी कि डगआउट में जा रहे हैं अपने। लगता है काफी जल्दी है हरियाणा की टीम को ये मैच खत्म करने की। अपने ऊपर संयम पेशेंस बना के खेलना पड़ेगा हरियाणा की टीम अगर ये मैच जीतना चाहती है तो, क्योंकि पंजाब की टीम बढ़त बना चुकी है 3 रन से। ये ना HDF ना, और रिप्ले में ये अनिल का रिप्ले नहीं आ रहा है ना, तो वरुण का ही आ रहा है। काफी अच्छा थ्रो था पंजाब के शॉर्ट के द्वारा। वरुण सेकंड बेस की कवरिंग की तरफ जा रहे थे। रिप्ले काफी अच्छा था। बॉल 1। बॉल 2। स्ट्राइक। यही फर्क है पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों में। पंजाब के खिलाड़ी अपने पेशेंस से खेल रहे हैं, काउंट लेकर खेल रहे हैं, और हरियाणा के खिलाड़ी आई और हिट लगाई। पहले ही 2 पिचों पर 2 ही बल्लेबाज आउट। फाउलेट। बेसबॉल की कोई भी मैच आप लाइव देखना चाहते हैं तो डीडीए बेसबॉल ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें। काफी अच्छी ग्राउंड रेट, अच्छी कलेक्शन और अच्छा थ्रो। 1 अवे। आइस कम करो तो नहीं। काफी अच्छा थ्रो था, काफी अच्छी कलेक्शन की। आंखें जमा कर रखी, अच्छा स्विंग था, लेकिन सीधा शॉर्ट के हाथ में। पैरेलल थ्रो सीधा फर्स्ट बेस के हाथ में, और फर्स्ट बेस एम्पायर ने आउट करार दिया अपने ही स्टाइल में। स्ट्राइक। हाँ, स्लोअर गेंद पे हम काफी अच्छा कलेक्शन फर्स्ट बेस के द्वारा। राजू रंजन जो हरियाणा के फर्स्ट बेस हैं, थ्रो को उठाया पूरा, अपनी चारों पिच में फंसाया पंजाब के बैटर को। देखिए अच्छा कलेक्शन। फंबल हुआ था लेकिन जल्दी बहुत अच्छा डिसीजन फर्स्ट बेस एम्पायर के द्वारा। एक दिखाना पड़ता, शो करना पड़ता है कि मेरे ग्लव्स में गेंद है। फर्स्ट बेस प्लेयर ने वही किया, बॉल कैरी करके ग्लव्स और बॉल को हाथ से उठाया कि हाँ मेरे ग्लव्स में गेंद है, शो किया। फाउल 8। टू अवे। रोमांचक मुकाबला है पंजाब और हरियाणा का ये।
हार्ड लाइन मुकाबला। आगे तो आना बेस्ट है। स्ट्राइक 2। पंजाब के कोच जो कि अपने टीम के बैटर को समझाते हुए अंपायर के साथ इतना ऊपर किससे क्या बात है। स्ट्राइक 2 बॉल 1। फॉवलेट उनकी रडार से दूर थी, लेकिन अब वो इस मौके को छोड़ नहीं सकते क्योंकि लास्ट स्ट्राइक है। स्ट्राइक 2 बॉल 1। पंजाब के खिलाड़ी अपने बैटर का हौसला अफजाई करते हुए थर्ड पोजीशन के लिए मुकाबला चल रहा है सीनियर नेशनल का। आप सभी लाइव देख रहे हैं हमें डीडीए बेसबॉल ऑफिशियल की साइट से। और बॉल हवा में, नीचे खिलाड़ी, लेकिन नहीं पहुंच पाए, मिस किया। चारों खिलाड़ियों के बीच में जाकर ये गेंद गिरी। अपना लक अपने साथ लेकर आए थे पंजाब के खिलाड़ी, चारों खिलाड़ियों के बीच में जाके ये गेंद गिरी। नहीं समझ पाए, एक दूसरे की कॉल नहीं सुनी और खिलाड़ियों के बीच में ही जाकर ये गेंद गिरी। एक सुनहरा मौका था हरियाणा के खिलाड़ियों के पास जो उन्होंने गवाया। लास्ट अवे था और अभी सेकंड बेस लोड है। रसगुल्ला कैच छोड़िए, बिल्कुल। देखिए कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा हरियाणा के खिलाड़ियों को। सेफ ऑन थर्ड बेस। काफी अच्छी रनिंग पंजाब के रनर के द्वारा। अभी जान जोखिम में डालकर पहुंचे थे थर्ड बेस पर, क्योंकि एक रन बनाना, एक एक रन जोड़ेंगे तभी दूसरी टीम पर बढ़त बनाएंगे। फाउल हिट। काफी अच्छे हिटर हैं ये पंजाब के। बॉल 1 स्ट्राइक 1। काफी अच्छी हिट लगाई है, ग्राउंड हिट बॉल, और रन काउंट करवाया अपनी टीम के लिए। 4 रन पंजाब के, सेफ ऑन फर्स्ट बेस। मिसाइल स्कोर चला गया। गया गया। काफी अच्छी हिट लगाई थी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। स्कोर चला गया आके। हाँ ये आया था 1 सेकंड के लिए और भी चला गया। काफी लीड ले चुके थे पंजाब के फर्स्ट बेस के रनर, लेकिन कैचर ने थ्रो मारकर उन्हें वापस ही उसी पोजीशन पर पहुंचाया कि नहीं, आप मेरे थ्रो से नहीं बचेंगे। एक दूसरे से अपना लोहा मनवाती हुई दोनों ही टीमें। फिर से वही होम लगाना चाहते थे शायद। हवा में गेंद और सीधा खिलाड़ी के हाथ में। लास्ट ओवर पर रन बनवाया हरियाणा की टीम ने और बढ़त पंजाब की 4 रन की।
Inning change. ये खाली गिलास दे दो, ये बोतल दे दो, ये एक मिनट सर को दवाई लेनी चाहिए। पेट में दुखेगा। क्या चाहिए? सबको। हरियाणा के बल्लेबाज तैयार। फिर से पिचर रेडी, बैटर रेडी। बॉल 2। बॉल 2 है हरियाणा के बैटर की। बॉल 3। काफी हल्के हाथ से पिच फेंक रहे हैं पंजाब के पिचर। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। आप स्ट्राइक। बॉल 3, स्ट्राइक 1। फ्री बेस। कहीं ना कहीं कुछ ढीला छोड़ रहे हैं मैच को पंजाब के खिलाड़ी। फ्री बेस दिया है, कहीं कोई खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए पंजाब के खिलाड़ियों को। मैं पिछली इनिंग में यही बात कर रहा था कि अपने पेशेंस से खेले, काउंट लेकर खेले, क्योंकि एक बैटर काउंट लेकर खेलेगा, उसके रडार में जो गेंद आएगी उसी पे हिट करेगा तो ही अच्छी हिट लगेगी। अभी पिछली इनिंग में देखा आपने कि दोनों ही बल्लेबाजों ने पहली पिच पर हिट लगाई और वहीं धराशायी हो गए। और अभी सेफ का इशारा दिया सेकंड बेस के एम्पायर ने। ब्लॉक किया था, कहीं ना कहीं वो खामियाजा भुगता पंजाब की टीम ने। ब्लॉक किया था सेकंड बेस के पास, बॉल नहीं, कोई कैरी नहीं, लेकिन फिर भी रनर को डिस्टर्ब के लिए करने आए और ये खामियाजा भुगतना पड़ा। बेहतरीन निर्णय एम्पायर के द्वारा जो सेकंड बेस पर मुस्तैद। स्ट्राइक।
जोर से मारना चाहते थे हरियाणा के खिलाड़ी, लेकिन फाउल हिट की तरफ गेंद गई। काफी लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं राजू, जो हरियाणा के दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं। बॉल 2, स्ट्राइक 2। काफी सुनहरा मौका, दोनों बेस लोड। अगर कहीं अच्छी हिट लगाते हैं, डबल प्ले का मौका, डबल प्ले का मौका बनाया और एक ही खिलाड़ी को आउट कर पाए। और सुनहरा मौका था पंजाब के पास, लेकिन एक ही खिलाड़ी को आउट कर पाए, जो एडवांस था, अच्छा थ्रो नहीं। थर्ड बेस के द्वारा काफी गेम प्ले का कोई अच्छा खासा अनुभव नहीं था, नहीं तो क्योंकि फर्स्ट बेस जो रनर है उसके पास काफी एडवांटेज है, वो पहले ही बेस छोड़ चुका है वो। और जो बैटिंग पर जो बल्लेबाज था, अगर थर्ड बेस कहीं ना कहीं देखते तो फर्स्ट बेस का जो रनर था वो आउट हो सकता था। हिट लगाई लेकिन ग्राउंड हिट, और फंसा रहे हैं थर्ड बेस के रनर को। सेफ। काफी अच्छा गेम प्ले दिखाया हरियाणा के खिलाड़ी ने, नहीं थ्रो किया। पंजाब के खिलाड़ी ने बॉल लेकर खुद ही आउट करना चाहते थे। गेम में रोमांच काफी। हरियाणा 2, पंजाब 4। देखिए किस प्रकार खुद ही आउट करना चाहते थे, ना ही थ्रो किया और ना ही कुछ। और पहले आप में हरियाणा का रन काउंट हो चुका है। सेकंड और थर्ड बेस लोड पंजाब के खेमे में चहल पहल शुरू हुई, क्योंकि स्कोर 2 रन बना चुका है हरियाणा। थर्ड बेस खिलाड़ी को चेंज किया है पंजाब ने, उनके खराब प्रदर्शन के कारण। हरियाणा काफी मैच में पकड़ बनाए हुए सेकंड और थर्ड बेस लोड है, 1 अवे है, काफी मैच में आगे, क्योंकि लीड कवर कर ली है। जोश देखिए हरियाणा के खिलाड़ियों का, अपने बैटर का उत्साह बढ़ाते हुए। थर्ड बेस लोड, सेकंड बेस लोड, स्ट्राइक। डरे हुए सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं हरियाणा के जो ये बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी एक अच्छी हिट उनके लिए टैप शॉट मारना चाहते थे, फर्स्ट और सेकंड बेस के ऊपर से डालना चाहते थे, उस दिशा में गेंद को भेजना चाहते थे। सिर्फ कनेक्ट किया था कि थर्ड बेस द्वारा रन काउंट हो जाए। स्ट्राइक 2। देखिए वही किया उन्होंने, सेकंड बेस की तरफ
वन अवे। और इधर भी अवे देखिए ये गलतियां कहीं ना कहीं हरियाणा को खामियाजा भुगतना पड़ा। एक ही रन बना जल्दबाजी में, टू अवे, और साइड आउट हो गई है हरियाणा से की भी। काफी अच्छी हिट लगाई थी उन्होंने, अपनी टीम को एडवांटेज दिलवाने के लिए। थर्ड बेस लोड था, खुद का बलिदान किया, लेकिन एक रन बनाया। लेकिन फिर सेकंड बेस वाले रनर जो कि कैचर के हाथों निस्तर नाबूद हुए। स्कोर 4 पंजाब, 3 हरियाणा। कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें, काफी बेहतरीन मुकाबला चला हुआ है ये। हार्डलाइन मुकाबला, आज का आखिरी मुकाबला है ये। कल आप हमें इसी चैनल के माध्यम से फाइनल मैच, जो कि महाराष्ट्र वर्सेस मध्य प्रदेश के बीच होगा, मेन सेक्शन का ये मुकाबला रहेगा। फोर टॉप, पंजाब 4 हरियाणा 3। हरियाणा टीम मैदान में उतर चुकी है। फोर टॉप है हरियाणा, एक रन से पीछे, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और अपनी बढ़त बनाते हुए 3 रन बनाए हैं। अगर पंजाब को ये मैच जीतना है तो अच्छी खासी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा का पिचर कहीं ना कहीं उन्हें आउट करने की कोशिश करेगा इस इनिंग में। पहली पिच पर हिट लगाई बॉल हवा में, लेकिन कोई प्रतिक्रिया किसी भी खिलाड़ी के द्वारा नहीं। बॉल फाउल हिट, स्ट्राइक 1। बॉल 1, स्ट्राइक 1। फाउल हिट, बैट चेंज किया है पंजाब के खिलाड़ी ने, क्या कुछ कर पाएंगे? बॉल 1, स्ट्राइक 2। काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है ये। फोर्थ बॉटम है, स्कोर 3 पंजाब 4। बेहतरीन नजारा। आप अगर शायद इसे यहाँ देखते तो आप काफी अच्छा महसूस करते। आप फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ, काफी हरा भरा
मैदान कुदरत का एक बेशकीमती नज़ारा है। इधर अमरावती से आप इस सीनियर नेशनल को लाइव देख रहे हैं। Strike 2, ball 1. Here we go. Ball 2, strike 2. Ball 2, strike 2. Ball 3, strike 2. Full count both sides. अभी ये पिच मायने करती है कि कहाँ किस मुकाम पर है ये मैच, क्योंकि इसी पिच से पता चलेगा कि पंजाब को एडवांटेज मिलेगी या डिसएडवांटेज। स्विंग एंड में स्ट्राइक आउट किया है पंजाब के खिलाड़ी को हरियाणा के पिचर ने। पीयूष जो कि हरियाणा के पिचर हैं, साथ ही खिलाड़ी उनका हौसला अफजाई करने पहुंचे हैं, क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला चला हुआ है इधर, जो कि आज का आखिरी मुकाबला है। थर्ड पोजीशन के लिए ये मुकाबला हार्ड लाइन का मुकाबला है। ये दोनों ही टीमें चाहती हैं कि हम ये मुकाबला जीतें, लेकिन जिसके हाथ नहीं लगा तो समझो अंगूर खट्टे हैं कहकर ये स्ट्राइक काफी अच्छी हिट लगाते हैं। होम लगाया था इन्होंने अपनी पिछली बैटिंग में। काठी के खिलाड़ी पंजाब के 2 बेस लोड थे, तभी होम लगाया था इन्होंने। बॉल 1, स्ट्राइक 1। काफी रोमांचक मुकाबला हो चुका है, क्योंकि स्कोर दोनों ही टीमों का बराबर है, लेकिन 1 रन से पीछे है हरियाणा। फिर से वही ट्राई करना चाहते थे कि बॉल को होम की तरफ भेजना चाहते थे, वही स्विंग किया, लेकिन निराशा हाथ लगी। फाउल इट, स्ट्राइक 2, बॉल 1। बल्लेबाज तैयार फिर से पंजाब के। अपना साइन किया कैचर ने, बॉल पिचर ने स्ट्राइक आउट। बॉल को देखते ही रह गए, लेकिन अपना आपा खो बैठे। लेकिन क्या करें, एक मंजे हुए पिचर ने वही गेंद डाली जो एक कॉर्नर को चीरती हुई सीधा कैचर के ग्लव्स में। देखते ही रह गए पंजाब के बैटर, और स्ट्राइक आउट प्लेट एम्पायर के द्वारा। 2 अवे। काफी हौसला अफजाई, हरियाणा के सभी खिलाड़ी जोश से भरे हुए, अपना लोहा मनवाते हुए पंजाब के खिलाड़ियों से। अच्छी हिट लगाई, बॉल हवा में, लेकिन
खिलाड़ी के आगे गिरी, सेफ ऑन फर्स्ट। बॉल तक नहीं पहुंचे थे, बॉल सामने गिरी, कवरिंग पर आए थे पिचर, वरना ये एक बेस एडवांस हो जाता था। फर्स्ट बेस लोड पंजाब, लास्ट अवे। स्विंग एंड मिस, स्ट्राइक वन। सेकंड बेस स्टिल, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं पिचर का। और बॉल काफी इनसाइड पिच थी, सेकंड बेस लोड। स्ट्राइक, स्ट्राइक टू, बॉल वन। अगर आप ज्यादा पीछे खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि बॉल ज्यादा बाहर है, लेकिन एम्पायर प्लेट के ऊपर और प्लेट के पीछे खड़े होते हैं, उन्हें सब पता रहता है कि बॉल कहां से कब कॉर्नर काट के अंदर आई है गेंद। काफी अच्छी हिट लगाई, फील्डर नीचे, लेकिन मिस फील्ड किया, एरर किया, फिर से वही गलती जो पिछले मैच में भुगतते आए हैं हरियाणा के खिलाड़ी। महाराष्ट्र के साथ भी यही उनका हाल था, लेकिन सेकंड बेस की तरफ हिट लगाई, प्लेयर सेकंड बेस की तरफ थे, लेकिन हाथ से लड्डू फिसल गया, इस तरीके से गेंद निकल गई और बॉल को सिर्फ कनेक्ट किया, क्योंकि स्ट्राइक 2 हो चुकी थी, सिर्फ कनेक्ट। एक रन अपनी टीम के लिए जोड़ा, लास्ट अवे। एक रन का इजाफा पंजाब की टीम में, 5-3 का स्कोर हो गया है। बॉल वन, सेफ ऑन सेकंड, स्ट्राइक। टाइम कॉल किया पंजाब के कोच ने। बॉल वन, स्ट्राइक वन, सेफ ऑन सेकंड बेस, लास्ट अवे फॉर पंजाब। बॉल सेफ ऑन थर्ड, आराम से स्टिल कर रहे हैं पंजाब के खिलाड़ी, कोई
दिक्कत नहीं हो पा रही उन्हें, क्योंकि लास्ट वे है। हरियाणा के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि इन्हें ही हम स्ट्राइक आउट या कहीं आउट ले लेंगे हम। और बॉल हवा में, नीचे खिलाड़ी और छुट्टी, कैच छुट्टी और खामियाजा फिर से वही। 1 रन पंजाब के खाते में, 6 रन पंजाब, 3 रन हरियाणा। बिल्कुल ही ग्लव से निकल गई गेंद, ज्यादा इजी के बिल्कुल ही नीचे थी, हाथ से गेंद छुटी। अगर ऐसे ही कैच छूटती रहेंगी तो मैच भी आपके हाथ से जाता रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा, कैच इज विन मैचेस। और आते हिट लगाई, कलेक्शन नहीं, फंबल। वही अपना रंग, फिर से एरर पे एरर और खामियाजा फिर से वही। सेफ ऑन फर्स्ट बेस, सेफ ऑन सेकंड बेस। हिट लगाने के चक्कर में बंट लग गया और दोनों ही सेफ। लास्ट अवे पंजाब के बल्लेबाज 15 नंबर जर्सी में पहुंचे हैं, एक मजबूत स्थिति में। फिर से एक हिट पर उनके रन काउंट हो सकते हैं। और बॉल हवा में, क्या प्लेट एम्पायर आउट दिया है, क्योंकि हमारी डिस्प्ले से निकल गया था। साइड चेंज आते ही मारना चाहते थे, यही खामियाजा दोनों ही टीमों को भुगत रहे हैं। पंजाब 6, हरियाणा 3। फोर्थ बॉटम है ये। अगर इस मैच में बना रहना है हरियाणा को तो इस मैच में स्कोर करना होगा, क्योंकि इसके बाद पंजाब की भी बैटिंग एक ही है और हरियाणा के भी एक ही बैटिंग है। इस मैच में कम से कम इस इनिंग में हरियाणा को स्कोर करना होगा। पंजाब फील्ड पर और हरियाणा फिर से बैटिंग। क्या अपने पेशेंस से खेल पाएंगे हरियाणा के खिलाड़ी, या फिर से वही गलतियां दोहराएंगे जो दोहराते आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी मुकाबला है दोनों ही टीमों का। फिर से वही, आते ही मारने की कोशिश की, हवा में गेंद और नीचे खिलाड़ी। 1 अवे। मैं यही बात कर रहा हूं कि अपने पेशेंस से नहीं खेल रहे हैं खिलाड़ी, आते ही हिट मारने की कोशिश। अगर आप कुछ काउंट लेके खेलोगे तो पिचर के ऊपर भी प्रेशर होता है। आते ही अगर आउट होगे तो दूसरी टीम हैवी हो जाती है आपके ऊपर और उनका प्रेशर रिलीज हो जाता है। क्योंकि जितनी जल्दी आप हिट करोगे पिचर को, उतनी ही कम पिच करनी पड़ती है। बॉल 1।
Ball one, strike one. ग्राउंड बॉल फंबल की है और नपा तुला थ्रो, लेकिन पहुंचे फर्स्ट बेस तक, स्लाइड लगाई, पहुंचे लेकिन सेव कहीं कोई ज्यादा चोट ना लगी हो, ग्राउंड हिट थी। ओहो, लेकिन पहुंचे सभी खिलाड़ी ओके, कोई ऐसी मैंने भी स्विच नहीं किया। बॉल वन, रनर दौड़े लेकिन अच्छा थ्रो नहीं किया, पहुंचे काफी तेज रनिंग और थर्ड पर पहुंचे, एक गलती से हरियाणा के रनर थर्ड पर, सेफ ऑन थर्ड बेस। पहले एरर किया, फिर से एरर किया और हरियाणा के रनर पहुंचे गिरते हुए, पड़ते हुए थर्ड बेस पर। क्या उनकी मेहनत रंग लेके आएगी? क्या अपनी टीम के लिए स्कोर खड़ा कर पाएंगे वो? थर्ड बेस पर पहुंचे हरियाणा के रनर वैभव। बॉल टू, थर्ड बेस लोड, बॉल टू, स्ट्राइक। के जो कि हरियाणा के बल्लेबाज कृष्ण कुमार अपनी टीम के लिए क्या अपना रन बनवा पाएंगे? क्योंकि उनकी हिट पे ही हरियाणा एक रन की बढ़त ले सकता। स्ट्राइक टू, बॉल टू, स्ट्राइक टू। फाउल इट। काफी अच्छी हिट लगाई, ग्राउंड शॉट, टू अवे, लेकिन अपनी टीम के लिए एक रन जुड़वाने में मदद की। 4 हरियाणा, तेज दौड़े लेकिन 100 स्टॉप पर बॉल और एक वन टिप में ही फर्स्ट बेस। अच्छा थ्रो, टू अवे, लास्ट अवे फॉर हरियाणा, बॉल वन।
बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, माफ कीजिएगा, बॉल 3, के ऊपर मेरा बाप आके बैठेगा कि तेरा बाप आके बैठेगा। हाँ, कम करना है। फ्री बेस, पानी दे दो, पानी मंगे और लड़े और भी खड़े हो गए। टाइम आउट लिया गया है ऑफिसर्स के द्वारा। ये नहीं लाना फिक्स करके छोड़ना, फिक्स करके छोड़ना।
The score now at 6-4 at the bottom of the fourth innings. Both the sides not giving up here, especially Haryana. A good fight back so far. They still have one more out left where they can probably try and equalize. And this time an opportunity on the second base. It's called safe on the second base. Strike two. Strike two. Ball one. Ball two. Strike two.
मैं इसीलिए बार बार पहले भी बोल चुका हूँ कि एक बैटर है उसको काउंट लेकर ही अपनी बैटिंग में खेलना चाहिए। और हरियाणा गलती कर रहा है बार बार, पहली पिच पर आते ही हिट लगाता है और वो सीधा ही फील्डर के हाथ में चली जाती है। इससे पिचर को कम पिच फेंकनी पड़ती है जिससे उसकी एनर्जी बनी रहती है। अगर आप पिचर को थकाओगे तभी मैच में, यानी कि वो एरर करेगा, बॉल ऊपर नीचे फेंकेगा। अगर उसकी एनर्जी बनी रहेगी तो वो पेस के साथ ही पिच डालता रहेगा। फाउल बॉल, स्ट्राइक टू, बॉल टू। पीछे देखना वरुण, पीछे देख जहाँ थ्रो मारेगा वहाँ लेके नहीं बोलना, नहीं है सेफ ऑन सेकंड, क्योंकि चेक लिया था, काफी अपने बेस से आगे निकल चुके थे। और फिर से वही सेफ ऑन सेकंड, क्योंकि निकलने नहीं दे रहे पिचर। काफी एडवांस ले रखा है सेकंड बेस ने हरियाणा के जो रनर है, और दौड़ने की फिराक में है। स्विंग एंड मिस, स्ट्राइक आउट। अगर एक अच्छी हिट लगाते तो हरियाणा कहीं ना कहीं अपना एक स्कोर और बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइड चेंज, फिफ्थ टॉप, यानी कि पंजाब के पास एक आखिरी मौका बढ़त बनाने के लिए। पंजाब 6 और हरियाणा 4। आखिरी मौका है पंजाब के पास बढ़त बनाने के लिए। आखिरी हार्ड लाइन का मैच है ये, पंजाब वर्सेस हरियाणा। अगर कोई भी टीम जीतती है तो खिताब अपने घर लेके जाएगी, वरना निराशा ही हाथ लगेगी। फिफ्थ टॉप, हरियाणा चाहेगी कि पंजाब को बिना ही कोई स्कोर के आउट किया जाए, क्योंकि उन्हें बॉटम खेलनी है। उनके पास एक मौका है, दोनों ही टीमों के पास एक एक मौका है। आखिरी इनिंग पहुंच चुकी है, खेल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा है। बारह नंबर जर्सी में पहुंचे पंजाब के बल्लेबाज अपनी टीम के लिए जान झोंकने के लिए पहुंचे हैं। एक दूसरे टीम अपना लोहा मनवाती हुई। बॉल टू। हमारे YouTube चैनल से सुरजीत सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि कमेंट कर रहे हैं कि लुधियाना ऑन टॉप अपने पिचर को ऑनलाइन ही क्लास दे रहे हैं। सुरजीत सिंह जी की अपने पिचर को गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरीके से पिच कीजिए। ग्रेट हिट बट फाउल हिट, स्ट्राइक टू, बॉल टू। 2-2।
काफी अच्छी डाइव लगाकर राजू ने कैरी की है बॉल। वन अवे। काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा पेशकश किया है राजू रंजन ने, जो कि हरियाणा के फर्स्ट बेस के खिलाड़ी हैं। बेहतरीन रिप्ले देखिए, आंख झपकते ही बॉल को अपने ग्लव्स में दबोचा और अपने बेस को टच किया। अपने अंदाज में फर्स्ट बेस एम्पायर आउट का इशारा किया। हरियाणा के पास तेज तर्रार गोल्डन आर्म के थर्ड बेस योगेश रोज, जो कि हरियाणा से खेलते थे, काफी समय से अपनी टीम का हौसला अफजाई करते हैं रहे हैं और अभी लाइव देख रहे हैं इस मैच को। बॉल डेड फाउल इट, यानी कि बैटर बॉक्स में ही बैटर को बॉल लगी, मतलब बॉल डेड। स्ट्राइक वन। पंजाब के लिए करोड़ मरोड़ की स्थिति। काफी अच्छी हिट लगाई, बॉल काफी दूर गई, लेकिन टू बे बॉल इन प्ले के अंदर ही खिलाड़ी दौड़ता हुआ लेके सेव ऑन सेकंड बेस। काफी अच्छी हिट लगाई, बेहतरीन शॉट। पंजाब के खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए एक अच्छी हिट लगाकर बेस लोड किया। वन अवे पर सेकंड बेस लोड। अगर पंजाब स्कोर करेगी तो कहीं ना कहीं मजबूती बना के रखेगी, क्योंकि इसके बाद हरियाणा की बैटिंग है। अगर वो कुछ बढ़त बना लेती है तो वो कहीं ना कहीं मजबूत रहेगी, क्योंकि पंजाब ने 6 रन बनाए हुए हैं अभी और 4 रन हरियाणा। बॉल और स्टील कर लिया है, कोई थ्रो नहीं, लेकिन पिचर और कैचर के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हाँ बेस लोड है, कभी भी स्टील कर सकते हैं, और पंजाब के खिलाड़ी ने वही किया, दौड़कर थर्ड बेस पर पहुंचे। सेफ ऑन थर्ड। स्ट्राइक, बॉल टू, स्ट्राइक वन। बंट का प्रयास, लेकिन बॉल बैटर के दायरे से बाहर जाने दिया। बॉल थ्री, स्ट्राइक वन। कोच का निर्णय कि बॉल आपकी रडार में आए तो ही हिट करना। फ्री बेस, क्योंकि बॉल थ्री थी और स्ट्राइक वन थी, अगर छोड़ते भी तो स्ट्राइक टू होती, और पंजाब के बैटर ने ये जोखिम मोल लिया और खुद को आगे बढ़ाया फर्स्ट बेस पर। वन अवे, थर्ड बेस लोड, फर्स्ट बेस लोड। काफी सुनहरा मौका पंजाब के पास एक स्कोर हासिल करने के लिए। लंबे कद काठी के खिलाड़ी होम लगा चुके अपनी टीम के लिए। दो बेस लोड थे, फिर से वही सिचुएशन इनके सामने। क्या फिर से ये अपनी टीम के लिए होम लगा पाएंगे? तैयार, बल्लेबाज तैयार, पिचर तैयार।
सेफ ऑन सेकंड। बॉल 1। और फिर से वही कैचर से बॉल मिस हुई और रन काउंट पंजाब का। फिर से थर्ड बेस लौट, 7 रन पंजाब के और 4 रन हरियाणा की, काफी बढ़त बनाता हुआ। थर्ड बेस लोड है फिर से 1 अवे पर पंजाब, 7 रन की बढ़त, 7 रन से, और 4 रन पर हरियाणा। 1 अवे। बॉडी बैलेंस अच्छी तरीके से नहीं बना पाए, बॉल हवा में, नीचे खिलाड़ी, और आउट, बेटर आउट। 2 अवे, लास्ट अवे फॉर पंजाब, फिफ्थ ऑफ, स्कोर 7-4। रिप्ले में देखिए कि बाहर की गेंद पे कैसे झूल गए, बॉडी बैलेंस नहीं बना पाई, और बॉल हवा में, फिर से होम लगाने के प्रयास में बॉल को हवा में सीधा फील्डर के हाथ में दे बैठे। लास्ट अवे है, पंजाब को अपने पेशेंस से खेलना चाहिए कि बढ़त बनानी है तो थर्ड बेस लोड है, क्यों ना इसका रन बनवाया जाए ताकि बढ़त बनी रहे मैच में। अगर मैच में जान डालनी है तो इन्हें, हरियाणा को, ये खिलाड़ी आउट करना होगा। हाँ, टैप शॉट लगा है खिलाड़ी के सामने गेंद, लेकिन ढीले हाथ से अवे किया, और स्कोर 7 पंजाब 4 हरियाणा। हरियाणा के लिए करो और मरो की स्थिति, 3 खिलाड़ी, 4 रन बनाने होंगे एक इनिंग में। 7 रन है, अगर मैच जीतना है तो उन्हें 4 रन और बनाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका है। पंजाब ने अच्छी खासी लीड बना रखी है। अगर हरियाणा को ये मैच जीतना है तो 4 रन बनाने होंगे, वरना ये मैच वो हार जाएगी, क्योंकि फिफ्थ बॉटम आ चुकी है ये। सेफ्टी इस गेम के लिए काफी है। अगर आप सेफ नहीं खेलोगे, अपने इक्विपमेंट्स डालकर नहीं खेलोगे, तो चोट कभी भी लग सकती है। लास्ट इनिंग हरियाणा की बैटिंग, और आप इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देख सकते हैं डीडीए बेसबॉल ऑफिशियल्स के माध्यम से। हमसे जुड़े रहिए। पहले नंबर के बल्लेबाज आए, सेबी नाम से जाने जाते हैं, जो कि हरियाणा के नंबर 1 की बैटिंग पर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। स्ट्राइक 1। अगर बेस लोड हो जाए और कहीं एक होम लग जाए तो ही इस मैच का रुख बदल सकता है।
कहीं ना कहीं तभी इस मैच में पकड़ बनाए रहेंगे। बॉल 1 स्ट्राइक 1। और हिट लगाई, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी भागते हुए और कैच को लपका, और हरियाणा की उम्मीदों पर पानी। सीधा खिलाड़ी के ग्लव्स में गेंद, 1 अवे। पर मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, अभी उम्मीद बाकी रखनी चाहिए। लास्ट अवे पर भी रन बन जाते हैं। कभी पहले आप मैच में देख चुके हैं, लास्ट अवे पर भी रन बन जाते हैं। हरियाणा की टीम से काफी दिग्गज बल्लेबाज आते रहे हैं, काफी अच्छे बैट्समैन रहे हैं, जिनमें से अभी कोच बन के आए हरियाणा की टीम से योगेश रोज, जो कि इनकी बल्लेबाजी की समीक्षा को सुधारते हुए अभी हरियाणा की टीम में वो कोच आए हैं। क्या उनके अभी बॉल 2, फुल काउंट पिक्चर, माफ कीजिएगा, फुल काउंट पिक्चर, बॉल 3। फ्री बेस राजू रंजन को, और कहीं ना कहीं कुछ ना इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बेस लोड होने पर पूरा प्रेशर पिचर के ऊपर आ जाता है। कहीं कोई एक अच्छी हिट और कहीं कोई स्कोर ना खड़ा हो जाए। स्ट्राइक 1। काफी सीधी पिच थी, लगता है कोच ने मना किया था कि अभी आप देखिए, दिमाग से खेलिए। काश ये पहले कोच अपने बैटर को समझा के भेज दे। कब अभी भी काफी देर नहीं हुई है, अगर वो सोच समझ कर खेले, काउंट लेके खेलें तो बॉल 1 स्ट्राइक 1। बॉल 2 स्ट्राइक 1। पंजाब के पिचर पहले अपर हैंड पिच फेंक रहे थे, अभी साइड आर्म पिच फेंक रहे हैं, जिनसे उनकी बॉल बाहर की तरफ जा रही है। स्विंग एंड में स्ट्राइक 2, बॉल 2। अपने ऊपर हौसला बना के रखे। बैटर ने पहले होम लगा चुके हैं पिछले मैच में, जो पुल के मैच थे उनमें होम लगा चुके हैं ये खिलाड़ी। काबिलियत है इनमें होम लगाने की। फुल काउंट बोथ साइड, बॉल 3 स्ट्राइक 2। हिट लगाए लेकिन फाउल हिट। फिर से वही साइड आर्म पेच, और बॉल बिना मारे ही इतने
खिंचे हुए मैच में 2 फ्री बेस कहीं ना कहीं पंजाब को निराश करेंगे कि 2 फ्री बेस और स्कोर एक अच्छी हिट पर 2 रन बन सकते हैं। कहीं ना कहीं कोच को समय लेकर अपने पिचर से बात करनी चाहिए कि ऐसे मौके पर ऐसा कदम न उठाएं। आप हिट करवा सकते हैं, आपके साथ एक खिलाड़ी हैं, आपका साथ देंगे। देखिए काफी अच्छी हिट लगाई ग्राउंड बॉल, लेकिन फंबल किया है बॉल को, फिर से फंबल किया है। दोनों ही खिलाड़ियों से बॉल छूटी है और 2 रन तैयार हो गए हैं। बिल्कुल ऐन मौके पर यही गलती, यहाँ जो फ्री बेस दिए थे दोनों ही रन बन चुके हैं। पंजाब को अपना खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ रहा है। दोनों फ्री बेस खुद दिए और दोनों ही रन काउंट। मैंने पहले ही बात की थी कि फ्री बेस कोई एरर ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। काफी अच्छी हिट लगाई हरियाणा के खिलाड़ी ने, 2 रन। स्कोर देखिए, स्कोर हरियाणा 6 पंजाब 7। सेकंड बेस लोड 1 अवे। और रोमांचक, कितना रोमांचक मुकाबला हो चुका है ये। काफी रोमांचक मुकाबला हो चुका है पंजाब वर्सेस हरियाणा का। पंजाब 7 हरियाणा 6। पंजाब ने अपनी गलतियां की और गलतियों के का खामियाजा भुगतना पड़ा। पंजाब के कोच काफी निराश, क्योंकि उनकी टीम ने ही गलतियां की हैं। पहले 2 फ्री बेस और ये दोनों ही खिलाड़ियों से एरर हुआ। सेकंड बेस लोड, अगर एक अच्छी हिट, स्कोर बराबर हो सकता है, क्योंकि सेकंड बेस लोड है हरियाणा का। बेहतरीन रोमांचक मुकाबला। कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें, क्योंकि कभी मैच इस तरफ जा रहा है, कभी मैच उस तरफ जा रहा है। आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं डीडीए बेसबॉल के माध्यम से लाइव यूट्यूब पर। सभी दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी इस मैच को देखने आ चुके हैं, क्योंकि मैच बिल्कुल रोमांचक मुकाबले पर पहुंच चुका है। एरर हुआ कैचर से और लीड ली है, फिर से थ्रो किया, लेकिन सेफ ऑन थर्ड बेस। ये गलतियां भारी पड़ रही है पंजाब पर। काफी निराशाजनक खेल का प्रदर्शन कर रही है पंजाब। काफी अच्छे बढ़त में थी। बेहतरीन प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा। लड़कर पहुंचे हैं अपना खिताब पाने के लिए। मेहनत, हौसला नहीं छोड़ा हरियाणा के खिलाड़ियों ने। ग्रेट हिट बट स्विंग एंड मिस। स्ट्राइक 2। एक का डिफरेंस है, एक रन का डिफरेंस है। सात छः। फेवरेट। कहीं ना कहीं इस मैच का अभी निर्णय
अटका हुआ है। क्या देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, हरियाणा की तरफ या पंजाब की तरफ। हवा में गेंद, काफी अच्छी हिट लगाई है और बॉल हवा में हो, स्कोर बराबर हो गया है 7 और 7 का। काफी अच्छी हिट लगाई है, स्कोर दोनों ही टीमों का बराबर, 7 पंजाब 7 हरियाणा। लगता है इस मैच में काफी कुछ बाकी है। अच्छा कनेक्शन किया, बॉल हवा में काफी देर रही। इस मौके पर अभी यही सिचुएशन थी कि बॉल को कैसे न कैसे आउटफील्ड में भेजा जाए ताकि थर्ड बेस का रन काउंट हो सके। बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं, अभी तक का सबसे कड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमों के कांटे की टक्कर, अपना लोहा मनवाते हुए। बॉल 1, स्ट्राइक 1। फाउल हिट, लास्ट अवे। बेहतरीन मुकाबला, दोनों ही टीमें अपने जोश के साथ, जुनून के साथ खेलती हुई, एक दूसरे से अपना लोहा मनवाती हुई दोनों ही टीमें। लेकिन पंजाब ने वो मौका अपने हाथ से गवाया अभी तक, क्योंकि 2 फ्री बेस और उसके बाद एक अच्छी हिट और एक एरर की वजह से हरियाणा को बढ़त मिली। स्ट्राइक आउट। अभी निर्णायक मंडल फैसला लेगा कि इस मैच को किस तरफ, कैसे, क्या, कितनी इनिंग बढ़ाई जाएंगी। स्ट्राइक आउट वैभव, ए साई अभी संविधान इनिंग संविधान कितनी बढ़ाई जाएंगी अभी निर्णय लेंगे इसका, 1 इनिंग या 2 इनिंग। अभी जैसी ही खबर, दोनों ही टीमों के कोच और मैनेजर को बुलाया गया है। अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में मेरे दोस्त। अभी ये ना सोचो कि मलाई हाथ लग गई, अभी दूध को उबालना पड़ेगा अभी और कुछ, तभी मलाई हाथ लगेगी, वरना पछताते रह जाओगे कि यहाँ कोई ट्रॉफी या कोई मेडल था, क्योंकि पोजीशन का मैच है ये। अभी कुछ डिस्कशन